फिर उसने कहा यू नीड टू कॉल योर फैमिली. मैं कहा आई एम नॉट गोना कॉल माय फैमिली. उसने कहा देन यू नीड टू साइन अ कंसेंट फॉर्म. मैं कहा किस चीज़ का कंसेंट फॉर्म. उन्होंने कहा कि वी गोना शॉक यू. और दोस्तों ने फिर मुझे कहा फ्लैट लाइन वेंट यूँ. एंड देन आफ्टर 3 सेकेंड्स 300 पे थी, 300 से वो एकदम ज़ीरो हुई है और ज़ीरो के बाद इट वेंट. उन्होंने लिटरली And then वो I wake किया up है. in the ICU. Shit. What if I train like an absolute animal? What if I forget everything? Tunnel vision. Train 5 hours a day, 6 hours a day. Eat right. Gym मेरे पास अपना है. मतलब you have absolutely no excuse. Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, he is the owner of Alpha Gym in Islamabad. He is a Reps Level 3 personal trainer. He is also my junior from Beacon House back in high school, and he is one of the very few actual natural bodybuilders that I know personally. And his name is Ahmed Malik, also known as Chief. अहमद क्या हाल चाल है? Alhamdulillah, बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाएं? Fit far, thank you so much for coming, bro. Always, bro. Thank you Yeah. so much for having me. Yeah man, no problem. यार मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि चीफ क्यों बोलते हैं? यार चीफ इसलिए बोलते हैं, it was a nickname given to me by my family. वालदा अच्छा. चीफ कहती थी. So that kind of caught on. दोस्तों ने चीफ कहना शुरू कर दिया. A lot of teachers started calling me chief. किस वजह से? ऐसे ही बस? Why, I mean, हाँ. अच्छा. दादी ने रखा था, I think. अच्छा. Initially. And then the family sort of caught on to it, and then friends caught on to it, और वो बस पक्का ही हो गया. अब मेरे से कोई पूछता भी है, कोई करीबी जितने भी मेरे दोस्त हैं, they don't really call me by Ahmed. They all refer to me as चीफा बस ये सुनता हूँ. चीफा. अपने वर्जन बनाए हुए लोगों ने. हाँ सही. तो फॉर एवरीवन्स कॉन्टेक्स्ट मैं एंड यू डोंट नो अबाउट दिस, मैंने पहली दफ़ा ना व्हेन आई सॉ यू कि ये कौन है ये लड़का, ये था कोई 10-11 साल पहले फिटनेस फ्लेक्स ना एक दिन आए थे तुम, तो वहाँ पे ऐसे किसी को लेने आए थे. F11 हाँ, किसी दोस्त को पिक करने या कुछ आए थे. तो वो मैं अपनी एक्सरसाइज करूँ, मुझे आवाज़ें आ रही थी साइड पे ना, वो बातें कर रहे हैं कि ये फलां ये, तो वो कोई बात कर रहा है कि हाँ यार विंग्स लगाते हैं, तो विंग्स ये तो विंग्स यो. तो एकदम से ना मुझे राइट से आवाज़ है कि एक बॉय कहता है यार मैं विंग्स नहीं लगाता, तो बाकी कहते तू क्या लगाता है? वो कहता है यार मैं बैक लगाता हूँ. मैंने कहा ये कौन है यार? I hate the word wing. तो मैंने कहा अच्छा ये कौन है यार? ये अच्छा ये Wings makes no sense to me यार, मतलब it's just one part wings, of हाँ, it's back, right? yeah. तो तो वो पहली दफ़ा मैंने देखा था. हम इंटरनेट वाली जनरेशन है, हमने तो मतलब विंग्स तो कोई भी नहीं होता हाँ. YouTube पे, you search for back workouts, right? Yeah. That was kind of my like कि नहीं यार back होता है. Exactly. तो यार why don't you walk us through कि भाई कैसे आए फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग में, क्या हुआ? यार I started training in 2011. ठीक है. The reason why I started in 2011 was because I wanted to train. मुझे बहुत शौक था शुरू से. I grew up watching Rambo movies, Sylvester Stallone. I used to watch movies with my father. He was already, military films और ये सारा कुछ. So I always wanted to train. But घर वाले जिम नहीं जाने देते थे. I was in O levels. I was about 5'7", 5'8". I was a short kid. Right? Still growing. तो घर वाले कहते थे नहीं, if you join the gym तो obviously हाइट रुक जाएगी, enjoy yourself, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे. So that sort of kept me away from the gym. मुझे कभी इस तरह इजाज़त नहीं मिली, right? And then 2011 I used to get into a lot of fights. I got into this fight with about a lot of guys. उसके बाद eventually when that settled down, everything settled, तो one of these guys came up to me and he's like यार की लड़ाइयाँ करनी होती, बॉडी बना लो, I'll show you. तो अगले दिन very next day I remember I had a pair of dumbbells. मेरा दोस्त है अली अब्बासी, he was genetically gifted. अली अब्बासी को आप जानते हो, he was junior in Beacon House. हाँ, वो काम भी किया हुआ उसके साथ. हाँ, ऑफिस काम भी किया, वैसे भी में ही था. हाँ. तो उसने कहा कि यार मैं आई एम प्लानिंग ऑन जॉइनिंग अ जिम, तो व्हाई डोंट यू जॉइन इट विद मी. मैंने कहा फिलहाल जो तेरे पास डंबल्स पड़े हैं वो तो देना. And I took those dumbbells and I just started working out at home for like a day or two. Didn't really like it उस तरह. Didn't really know what to do. Did a bunch of bicep curls. वो 6 kg का डंबल था तब मेरे से, वो 6 kg नहीं उठता था. So I realized, all right, I need a full-fledged gym. And then after this whole incident, my family was kind of okay with it as well. कि अच्छा यार चलो, he's trying to build himself. ये मसला भी हुआ है इसके. So that's how I sort of joined gym.
ठीक है, लोकल जिम था एट में, लाइफस्टाइल जिम, अहमद सादिक, सही है। ही वाज द ओनर ओवर देयर. तो मी, बासी, अ कपल ऑफ अदर माय फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया कि अच्छा यार साथ चलते हैं. सो वी वुड गो अराउंड 4 PM, train for a bit, and then go to the academy. पढ़ाई भी कर रहे थे साथ साथ. Didn't really gain a lot muscle. शुरू में आपको पता है, you don't really know a lot of things about the gym. So on and off था बहुत. कुछ अर्सा मोटिवेटेड रहा, फिर छोड़ दिया. पढ़ाई आ जाती थी बीच में, घर वाले कहते थे एग्जाम्स का टाइम है, जिम नहीं जाना, ये वो इस तरह करते करते. फिर उसके बाद जिम जब महीना 2 महीना हो गए तो for some reason a lot of my close friends used to make fun of me कि यार तू क्या करने जाता है जिम, तू मशीनों को तेल देता है, सेहत देख अपनी. समझ, आई वाज दैट स्किनी, आई वाज अबाउट 45 kgs. दैट डिडंट रियली सेट राइट विद मी. अच्छा चलो, पूरी थ्रू आउट दिस वो ना, मैं इसी तरह खार खाते खाते मैंने कहा अच्छा चलो मैं बताता हूँ तुम्हें. देन आई स्टार्टेड गोइंग इन द मॉर्निंग बिकॉज आई वाज एम्बैरेस्ड टू गो. इन द इवनिंग लोग मजाक उड़ाते थे, अच्छा, ऐसे खाली बाहर नहीं उठता था. अच्छा, अच्छा, बाबल हाँ, 5 हाँ, kg हाँ, वाला वो हाँ, नहीं उठता था मेरे से. मैं अच्छा, उठाता था, स्ट्रगल. स्टार्ट गोइंग इन द मॉर्निंग, सुबह जाता था, तिलावत लगी होती थी, खाली जिम. अहमद सादिक वाज देयर, द ओनली पर्सन. ही ओपन अप द जिम, ही वाज द ओनर, राइट. एंड ही वुड गिव मी वर्कआउट्स. अच्छा अब ये करो, तो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स टुडे, ऑलराइट, इसके लिए ये करो, ये करो, ये करो. एंड आई वुड जस्ट पुट माय हेड डाउन, वर्क ऑन दैट. साल इसी तरह किया, एंड देन स्लोली स्टार्टेड बिल्डिंग अप. फिर ऑन एंड ऑफ होता रहा. ए लेवल्स आ गया, ए लेवल्स में भी फिर एग्जाम्स आ जाते हैं तो घर वाले कहते हैं साइड पे हो. सही, आई प्रॉपरली गॉट इनटू ट्रेनिंग व्हेन आई वेंट टू द which ठीक है, was 2012. मतलब अभी मेरा एडमिशन हुआ नहीं था, बट आई न्यू कि मैंने जैसे ही यूके पहुंचना है, द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज़ गेट अ जिम मेंबरशिप. तो एज सून एज आई लैंडेड इन शेफील्ड, मेरी जो अकोमोडेशन थी वो सिटी सेंटर में ही थी. सो आई सॉ जिम नियर बाय एंड आई वाज लाइक, मेरा भाई मेरे साथ था, मैंने कहा यार मैंने ये जिम ज्वाइन. प्योर जिम उसका नाम था. it was 24/7, so it was ideal. I usually train at night, that helps. मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ रात को ट्रेन करने में, सुबह में से ट्रेनिंग नहीं होती. It was 24/7. I'd go midnight, 1 बजे आराम से, and I would train and come back. That's where I sort of started properly train. सही है. और यूके जो है किस सिलसिले में गए थे? एंड इफ यू कैन जस्ट स्पीक अ लिटिल क्लोजर टू द माइक. यार तो मैं यूके क्या करने गए थे भाई? So as soon as I was done with A levels, two of my brothers were in the UK. It's the longest time since I was in 6th grade. तो घर वालों ने भी कहा कि यार मतलब एक बच्चे को हम नहीं भेजेंगे तो तुझे कुछ नहीं लगेगा कि बाकियों को भेजा था, मुझे नहीं भेजा. So I had to sort of go. फिर वाले साहब ने कहा कि यार why don't you pursue engineering, go abroad, That's how I sort of went to the ठीक है, तो इंजीनियरिंग करने तब. yeah, mechanical engineering. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक था कि बस के शौक है था. तो कर लेते हैं? शौक शौक था. था, I अच्छा, was अच्छा, I wasn't really given guidance per se. राइट. Guidance in the sense कि मुझे शौक इंजीनियरिंग का उस तरह नहीं था, मुझे गाड़ियों का शौक था, right? I wanted to get into motorsports engineering. Motorsports engineering में you have all of your F1s, MotoGP, Indy, NASCAR, इस तरह की चीज़ें, right? So that fascinated me. मुझे था कि engineering करूँगा, and then that's my ticket to sort of get into these. The first year I got into engineering, that was a completely different experience. मैंने कहा यार इधर तो सारी maths है, there's no cars, nothing. There's no designing, there's no building anything. It's just paperwork. You just have to sit down, further maths करनी है, and I dread maths. I hate maths. अच्छा, Right? अच्छा, सही. So very early on, I sort of realized कि oh, I'm in the wrong profession now. But obviously, you're a Pakistani desi kid. You're spending a lot of money on your education, right? So you have to push through. You can't really say कि अच्छा जी अम्मी अबू मैं वापस आ रहा हूँ. Really a choice. Yeah, So I kept going with it. ठीक है. It was a master's course for 4 years. फिर मैं गया अच्छा. अपने supervisor के पास, उसको मैंने बोला कि यार I don't really see a future in this. So do you really think I should pursue masters? उसने कहा you're going to spend extra money on it as well. Plus you don't want to really pursue it. So might as well shorten up the course, do a bachelor's degree, and then maybe, you can think about it, okay, what you want to do. So I changed my course to bachelor's degree. ठीक है. So, बैचलर्स की एंड देन वापस आ गए पाकिस्तान. हाँ bachelor's की मैंने I had a job in Cummins Turbochargers. That was a small facility in Huddersfield. They basically built turbochargers, right? तो वो मेरी इंटरेस्ट की चीज़ थी. As soon as I went there, I was like, नहीं, उसमें भी मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया. अच्छा. So then I sort of साथ साथ मेरा ट्रेनिंग on point थी. I was मतलब 6-7% body fat, very good, abs shredded. अच्छा, क्योंकि अच्छा, मेरा गोल था कि as soon as I graduate, I need to have a six pack, I need to look like this, ये वो.
फुल अपना ये नहीं कि इंजीनियरिंग का एक वो है ना व्हाट यू से देयर इज अ स्टीरियोटाइप राइट ऑल इंजीनियर्स आर फैट ग्लासेस नर्ड्स तो मुझे था कि ठहरो मैं बताता हूँ ऐसे नहीं होता सही so as soon as I graduated I was probably in the best shape of my life 6-7% body fat the first transformation you saw as well on your page the first few on the pictures वो first few वाली pictures yeah सही सही that was सही 2015 as soon as I graduated I posted ठीक those pictures के hello भाई आ गया so that was 5-6% body fat हाँ dry मैंने बिल्कुल देखा है completely I हाँ wasn't really huge but या it was a achievement for me यार 3 सही साल सही मैंने अच्छी खासी मेहनत की उस पर ठीक है as soon as I graduated तो मुझे था कि यार इंजीनियरिंग का तो मुझे पहले से पता था कि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं मुझे नज़र आ रहा so might as well do something that I enjoy right so I got into personal training I started looking for courses अच्छा जी इसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ then I found Premier Global which is I think the UK's biggest personal training sort of organization right I got myself inducted in that was like a 4-month course वो साथ शुरू कर दिया and that's how I sort of started building up ठीक then है eventually I decided called up my father I'm like I've graduated this I don't really like the jobs here वो Huddersfield वाली job छोड़ी तो then I was like कि personal training की job करते हैं right there was a town called Gainsborough का नाम ही Gainsborough था हैं हाँ एक्चुअल वहाँ नाम पे रायन टेरी भी ट्रेन करता था for some reason पता नहीं 1-2 दफ़ा आ चुका था अच्छा so I अच्छा was very interested in joining that gym सही when they smashed the interview they asked me to मतलब sign up about 3 clients I did that in about 5 minutes so it was a wonderful sort of opportunity right but the hiccup came when they said okay, we can't really sponsor you so you're an international student right you don't really have a working visa and your earning potential is not going to be fixed it's uncapped some months you might be making let's say x amount of money or अगले महीने x amount of money होगी for the visa sponsorship you need a fixed amount of money ठीक so that sort of closed that door so I was like all right I'm gonna go back and I सही came back ठीक है and you came back here and you pursued engineering for a while I did I applied to a number of organizations I worked with I had a procurement job as soon as I landed but that was a procurement job right that wasn't really an engineering job supply chain procurement हाँ का इस तरह की चीज़ आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट था अच्छा सही उधर वाले साहब का भी एक जाने वाला था उसने कहा यार व्हाई डोंट यू सेंड हिम टू मी आई start him up with a procurement job and then maybe that is gateway to sort of into the industry and then he can expand from there so I started doing that hated that job पिंडी में थी वो सुबह सुबह मेट्रो पकड़ो पिंडी जाओ सदर वहाँ से AWT के प्लाजे तक जाओ मतलब it wasn't really plus it wasn't really degree related either right so then I found a company that was working with the government and making I'm not going to say what they were making it was sort of a sensitive organization okay you can say they were working on defense sort of so I applied there that was a job I was really interested in मेरा final year जो project था that was about drones building a drone so that's the only module जिसमें I aced that module because it was a design and a build I'm सही not the sort of person who sits down and solves math problems right give me something to build with my hands so that was my final year project and I aced that was my distinction और उन दिनों इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने अप्लाई किया था वो दे वर बिल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर तो आई गेव अ वंडरफुल इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया आई वाज प्रीटी मच प्रॉमिस्ड द जॉब देन इट केम टू अ पॉइंट वेयर दे सेड कि ऑलराइट वी नीड टू सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करेंगे डिड दैट फॉर 6 months वाज लाइक ओके 6 महीने गुजर गए मेरे गांव जाते थे घर आते थे सेट डाउन आस्क मी कितनी खलाएँ कितने सिक्योरिटी क्लियरेंस यू नो इट्स अ बिग वो नेबर से पूछते थे फिर देन इवेंचुअली 6 months later decide कि why don't you come in and collect your offer letter I went in excited कि अच्छा यार चलो I finally got the job ऑफर लेटर में कलेक्ट करने गया एंड दे सेड कि हमारे पास आपका ट्रांसक्रिप्ट नहीं ठीक है दिस वाज वेरी ऑड 6 months right I've given the interviews I've done everything तो आप बराए मेहरबानी हमें अपना ट्रांसक्रिप्ट दे मैं कहा ठीक है I went back came back with a transcript मैं कहा जी आपको अगले दिन ऑफर लेटर मिल जाएगा आज तो छुट्टी हो and then the next day I was rejected so that made no sense to me कोई गेम ले लिया बीच में हाँ और मुझे बड़ा उस पर हुआ कि यार मैं बाहर का पढ़ा हूँ आई स्पेंड अ लॉट मनी ऑन दिस स्पेंड अ लॉट टाइम ऑन दिस आई स्पेंड 3 years बैचलर्स डिग्री की है एंड नथिंग रियली केम उस तरह तो मुझे वाले साहब ने भी कहा कि यार डोंट वरी अबाउट इट व्हाई डोंट यू परस्यू योर पर्सनल ट्रेनिंग एंड बॉडी बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ वो सो आई वाज कंटेंट कि अच्छा चलो यार फैमिली मान गई है फैमिली हैज़ रियलाइज कि अच्छा यार देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग जॉब्स इन पाकिस्तान इवन इफ देयर आर you have to go outside Islamabad
या यही है. राइट. हम्म. वो सारा कुछ ख़त्म हुआ. देन 2 हफ्ते नहीं गुजरे थे. हाँ. 2 हफ्ते बाद वाल साहब ने कहा यार वो देयर इज अ जॉब ओपनिंग इन फौजी सीमेंट, यू वांट टू जॉइन? अच्छा. मैंने कहा नो नॉट रियली. यार कर ले कुछ अर्सा, डिग्री की है. मतलब देसी माँ बाप का ये होता ना कि यार डिग्री की है तो परसू अ जॉब इन हाँ, दैट. वो हाँ. व्हाई जॉइन दैट? ठीक है. That turned out to be a horrible decision because since I'm a mechanical engineer, मेरी जो job थी that was on site in the industry at the cement factory. सही है. I was under the impression कि I'll be working in an office हम्म. जो कि रावल रोड पे था पिंडी में. अच्छा. So I went there. Uh, the guy for some reason immediately recognized क्योंकि मेरी कोई पोस्ट आई हुई थी Humans of Pakistan or something like that उस पे. तो उसने कहा अच्छा. कि यार aren't you the guy who was saying कि I've left my engineering job and now I'm उसने पहचान लिया मुझे. तो उसके साथ थोड़ी गपशप लग गई. फिर उससे मैंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि यार व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन, वेयर एम आई गोइंग टू बी वर्किंग. उसने कहा सिंस यू आर एन इंजीनियर ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू द प्लांट. मैंने कहा प्लांट किधर? उसने कहा जंग बहादुर. मैंने कहा वो किधर है? उसने कहा वो है टेक्सला के पास. मैंने कहा हाउ विल आई गो देयर एवरी डे? आई हैव टू स्टे देयर. उसने कहा नहीं, अ बस विल टेक यू देयर एवरी डे, सो यू हैव टू शो अप around 6:30 and समझ गया. then they'll pick you up and then हाँ. they'll take you all the way there and then you can come back on that. मैं कहा प्लांट के चलो तो बड़े रोले होते हैं ना. या ब्रो शट डाउन एंड देन ये तो वो हाँ. कभी रुकना पड़ गया कभी ये. बड़े मसले थे वो. हाँ. तो वो कितना अरसा वहाँ किया फिर? So I joined that. I did that for a year. राइट. And then I got fed up. I was like, this is not the life. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वर यू आल्सो परसुइंग पर्सनल ट्रेनिंग? I was. ठीक So है. this was 6 days a week. I'd wake Yeah. up at 6 a.m. 6:30 I'm in the car. 6:30 my dad's going to drop me off at the bus station ये गोल्डरा के पास. अच्छा. I'd get off there, wait for the bus. If you miss the bus, you're done. हम्म. If you don't miss the bus, so you sit in the bus, travel for about 1 hour 15 minutes, get to the plant, and then grab your gear, your cap, and everything, and just walk towards the whole cement line. Uski taraf. Uh-huh. Saturdays are on as well. हम्म. So I came back from there at 6 p.m. and then gym, personal training, clients. So I'd Okay. get free from there around 10, 11, train myself, come back home around midnight, eat, sleep at around 1, 6 a.m. back again. Like That was 5 hours of sleep. yeah. And that messed me up for a year. हाँ. My recovery went to absolute खत्म हो गई बिल्कुल recovery. Injury started happening. Tore my ACL because I was playing football with steel toe boots at the plant. हाँ Break क्योंकि time वहाँ मिला. तो वही है स्टील टू. हाँ मतलब आपको थोड़ी सी ब्रेक मिलती है. क्या हाँ. एंटरटेनमेंट है? कुछ भी नहीं है राइट. तो हाँ. बॉयज़ ने कहा फुटबॉल खेलते हैं. आई वाज प्लेइंग फुटबॉल विद स्टील टो बूट्स. दैट टोर माय ACL. अच्छा. जब वो सारा इस तरह होने लग गया ना, आई स्टार्टेड सीइंग मतलब वो फिजिक मेरी थोड़ी सी रिग्रेस करने लग गई. आई स्टार्टेड गेटिंग सिक अ लॉट, accumulating all of these injuries. So I was like, this is not the life for me. Change this. ठीक है. That's when I decided कि यार I'm gonna quit. My father was against it completely. कोर्स. हम्म. But they were, although it wasn't much, they weren't really paying me a lot. What they paid me for a whole month's of work was I was charging that from one client. अच्छा. So money wise, didn't make any sense. हम्म. Plus, I had no interest in cement. हम्म. So it was a no-brainer, right? और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए होंगे जिनको फील हो रहा होगा कि यार जिंदगी बन गई है ना. होंगे ना pretty much. जिनको देख के Pretty यू much. मस्ट हैव बीन लाइक इनका क्या सीन है यार. But I was very fortunate to have a lot of good people around me over there. हम्म. They immediately understood कि I'm not interested in this job. They immediately knew कि अच्छा यार इस बंदे में बॉडी बिल्डिंग की तरफ या इस चीज़ों की तरफ टैलेंट है, so he should pursue that. So my manager would all the time say कि यार what are you doing here? Why are you wasting your time? Be opening up your own gym. I've heard you've been training. उन दिनों we were training celebrities as well. So everyone Right. sort of knew. तो उसको था कि यार you have such a good base, such a good foundation. What are you doing here? हाँ. That kept on pushing me कि हाँ यार क्या तो ठीक रहा है. And then I eventually quit. चलो अच्छी बात है. मैनेजर जिस तरह का था who saw that हाँ, in you. pretty much. ठीक है. तो you quit. This was 2016 ऐसे? This was 2017 actually. 2017. 2016 I joined. अच्छा. ठीक February है. 2016. सही है. And February 2017 I quit. ठीक है. ठीक है. Exactly साल बाद. Exactly साल बाद. ठीक है. And then you started Because I was ramping supposed to up. get a promotion as well, right? I was अच्छा. waiting for that promotion कि अच्छा चलो ठीक है, maybe if you give me a slightly better pay, हाँ. a better position, so I can think about it. ठीक Once है. that didn't happen, तो that I completely lost my वो कि यार मतलब ये क्या बात हुई. हम्म. Then I quit. क्योंकि वहाँ पे चलती है सिफारिश, सीधी सी बात है. अच्छा. आपके सही. वाले साहब जनरल हैं, पार्टी आप.
नहीं है. पढ़ ला. ठीक ठीक. तो उसके बाद यू स्टार्टेड रैंपिंग अप योर पर्सनल ट्रेनिंग, क्लाइंट्स बढ़ा लिए होंगे. उसके बाद आई completely indulged into personal training. हाँ. उन दिनों पावर हाउस भी चल रहा था. There was the clothing thing as well. हम्म. That was working fine. फिर मुझे शौक चढ़ा कि मैं इतनी ख्वारी करूँ, जॉब करूँ. I need to buy a motorcycle now. Treat. So I took all of that money and bought motorcycle. कौन सा वाला? The Gixxer 750. अच्छा अच्छा, सही. हाँ. वैसे मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से पता है बस बाइक्स वो का. उस टाइम मुझे शौक चढ़ा था, so I सही. bought that. उस पे अच्छा भी वाले अच्छा. साहब ने कहा कि यार क्या मतलब, ये क्या बात हुई. हाँ हाँ And then this was February 2017. हाँ. I was in the process of sort of getting myself a motorcycle, and he was against it, highly against it. कि नहीं, you're gonna crash, you're aggressive. I know you're gonna ride aggressive, you'll crash into something, and no, I don't want that. I was like, I'm grown up now, you know, relax, I'll handle it. But he's like, no. वो सारा कुछ खत्म हुआ. So this was, I guess, May आ गया 2017 में. ठीक है. That's when he walked in and then told me कि यार I don't really feel so good. अच्छा 2017. 2017. राइट राइट. अच्छा अच्छा. So that took about 3 weeks and he was diagnosed prostate राइट. cancer. किस उस वक्त किस लेवल का था? किस फेस? यार so 6th May we went to the hospital. कोचिंग को आपको पता है CMH के अलावा तो कहीं जाते नहीं है. So we went to CMH. They started running some tests. They said we need to admit your father. ठीक है. I was like okay. It took them about 2 weeks to finally figure out. They knew something was wrong. ठीक है. But हमें एक होता ना, इंसान को उम्मीद होती है, होप होती है, नहीं यार, don't think about the worst, maybe, you know, there's a chance. 22nd of May they sort of confirmed कि prostate cancer is stage 4, last stage, 9 out of 10 Gleason score. 9 out of 10 Gleason score means कि it's very aggressive. अच्छा. So we need to start therapy, some sort of treatment immediately. ठीक है. So his whole diagnosis happened and I got busy with that. मैं सारा कुछ, अच्छा अच्छा. treatment शुरू हो गई, his chemo started. ठीक ठीक. Yeah. सही. And this went on for two years, something like that? Yeah, this went on. So he was diagnosed in May of 2017 and he passed away January 2nd. Almost 3 years. ठीक ठीक. Whereas the doctors gave him 6 months. अच्छा अच्छा. He's got सही. 6 months to live. नहीं, prostate cancer, I think that's not talked about often. It is not है ना? talked about at all. It is. मतलब औरतों का ब्रेस्ट कैंसर की फिर थोड़ी बातचीत शुरू हो गई है. मर्द नहीं बात करते इस बारे हाँ, में, which prostate is cancer की odd. नहीं होती. I don't know why. करनी चाहिए यार. Obviously, it is probably statistically, it is the second largest cause of death after lung cancer. Lung cancer being the top number 1. अच्छा Prostate cancer is the second biggest. अच्छा अच्छा. And the only prevention is an early sort of diagnosis. Okay, Right. For example, अगर थोड़ा सा पहले diagnose हो जाए तो there's a high chance कि you'll pull through. But if it's the last stage, so obviously it's going to be a little more tough, right? Yeah. So early diagnosis is the right way to do it, especially if it's in your family. As soon as you touch 40, 45, you need to go get yourself screened every year, every 6 months if you can. If it's not in your family, to start at 50. But करना तो है ना यार. अगर if you catch it at the right time, there's a high chance, Yeah. you and your family don't have to go something tragic. Yeah. मेरी फैमिली में it's pretty common. तो my dad's side of the family ना, तो वहाँ पे it's pretty common. मतलब कि मेरे काफ़ी जो होते हैं ना रिश्ते में ताया वगैरह, उनकी recently deaths हुई हैं, all prostate cancer. Yeah. My dad also got it, but that was not the cause of his death. लेकिन उनका भी prostate cancer What was the cause diagnosed of your हुआ था. father's death? It was a combination of things, like he had a heart attack, he had some issues with his lungs because of smoking. Yeah. So a combination of all those things that accumulated. लेकिन It's very उनको common भी in your family. it's very common So in my as soon as you family. turn Yeah. 40, you need to, Yeah. start getting yourself screened. Yeah, But yeah. prevention है, उसकी prevention इस तरह है कि obviously you need to have a healthy diet, a healthy lifestyle. You need to work out, you need to train, you need to exercise. और अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, exercise कर रहे हो, तो there's a high chance कि you'll be healthy, right? If you're fat, obese, smoke, you don't really give yourself a lot of exercise, you don't really give yourself a lot of sunlight, small things, the small healthy steps. So you're not really giving yourself a fighting chance, are you? Yeah. Plus it's something that's very hushed.
एंड द गुड थिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स के, मैं आपको यही कह रहा था कि मोटरसाइकिल्स का भी a lot of predominantly guys love motorcycles, right? Mhm. So there's this gentleman's ride as well, जिसपे that's all about prostate cancer awareness and mental health and all of that. So वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आना शुरू हुआ because अच्छा a lot of अच्छा men, you know, suffered because of that. या So, very important. Awareness is very important. तो how did, if you're comfortable talking about it, how did your father's death affect you mentally, physically? ट्रेनिंग में क्या हुआ, फ़र्क आया, क्या होता था? क्योंकि I can personally relate with that. Yeah. What was your journey like? यार when he got diagnosed, तो we were still under the impression कि there's a chance, हाँ, right? होता तो है मैं इंसान जिद्दी को। आदमी हूँ, मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि you've got 6 months. I was like, what do you know? हम्म Right? I'll try this, I'll try that, and we'll figure it out. मुझे था कि if mentally you're focused, if mentally you're strong, you've got fortitude, तो you can handle anything. वाले साहब के साथ ये डिस्कशन थी, वाले साहब को भी जब कंफर्म हुआ तो वी हैड दिस मोमेंट वेरी साइड के यार डोंट वरी अबाउट इट, आई विल फाइट इट, नीड टू स्टे स्ट्रांग. सो उस टाइम आई रियलाइज के अच्छा जी आई नीड टू पुट माई बिग बॉय बूट्स ऑन, राइट. उससे पहले आई वाज अ सॉफ्ट किड, आई डिडंट रियली केयर, मम्मी डैडी, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, नाइस कार, मोटरसाइकिल. सो व्हेन दैट हैपेंड तो आई वाज लाइक अच्छा नाउ आई नीड टू स्टेप अप बिकॉज आई एम द ओनली सन हियर, आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, दे आर ऑल अब्रॉड, एक यूके में एक सऊदीया में. सो आई वाज द प्राइमरी केयर टेकर. So I didn't really give myself a lot of वो एक होता है ना processing your emotions. I was like, take all of this, इसको अभी side पे रखो, and then you know I'll deal with this later on. So I had to completely focus on his health. मेरा यही routine भी उनके इर्द गिर्द बनना शुरू होगी. Even if I go to the gym, I come back early because I know my father's sick. I need to get home, sit with him, talk to him, give him a massage, पैर शैर दबा दिए, खाना शाने का पूछ, समझे इस तरह. So that's how it started. Then I started looking after his medication, his treatments, taking him to the hospital. So I got into it 100%. I didn't really care about what I was feeling at that moment. ठीक है. As जूं जूं वक्त करीब आता गया, उनकी सेहत डिटोरिएट होती गई. So he had some goals in his mind. उन्होंने specifically since we were very close, यार, he was probably my best friend. Nothing comes close. Obviously, it's your father, right? तो काफ़ी इनके साथ डिस्कशन होती थी. उनके जहन में था कि यार ऑब्वियसली आई हैव अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, यू नो दैट, आई नो दैट, सो आई नीड टू गेट सर्टन थिंग्स डन इन दिस लिमिटेड टाइम पीरियड, विच इज़ गेटिंग यू मैरिड, गेटिंग ऑल ऑफ माई सन्स मैरिड. और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे अपने बिजनेस सेटअप करो, शुड बी सेल्फ सफिशेंट, सारा कुछ बेसिकली मैं करके आई नीड टू गेट डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मैंने हज परफॉर्म करना है, ये सारा कुछ करना है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू फिगर आउट. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते गए. ऑल ऑफ अस गॉट मैरिड विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 2 years. उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि यार इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड तो डू इट सून बिकॉज ही डजंट रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम. मेरे जहन में ऑपोजिट थ्योरी थी. मेरे जहन में था कि इफ़ आई डिले दीज इवेंट्स तो ही हैज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड दैट विल गिव हिम द मोटिवेशन टू सॉर्ट ऑफ. बाकी अल्लाह की मर्जी है यार, इंसान वही कर सकता है. तो उन्होंने कहा जी दिस इज़ 2019. उन्होंने कहा जी जून है आपके पास, जून के बाद आपके पास वक्त नहीं पहुँचेगा. मैं कहा जी जून में मैं नहीं कर रहा, मैं नवंबर तक खींचूँगा. तो वो मैंने नवंबर तक खींची बात. और जब द इवेंट हैपन, द वेडिंग हैपन, तो आई न्यू के दिस इज़ द लास्ट सॉर्ट ऑफ. इसके बाद देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, राइट, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू सॉर्ट ऑफ कॉन्कर एनी मोर और परसू और अ गोल टू सॉर्ट ऑफ वो. सही. सो वी ऑल सॉर्ट ऑफ न्यू कि अच्छा जब ये ओवर हो जाएगा तो दैट्स काइंड ऑफ द एंड. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. ही rapidly started deteriorating and within 2 months he passed away. सही. Yeah, that's, क्या करे, इसमें अल्लाह की मर्जी है. Lucky मर्जी है. He's in a much but- better place. Yeah, that's comforting to Yeah. think about. लेकिन it's good that जो उन्होंने सोचा हुआ था वो सब हो गया हाँ. in his lifetime. Yeah. That's Exactly. good. He had Yeah. a certain set of instructions that I had to follow. Uh-huh. I followed those instructions. He Mhm. knew precisely. उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया था कि यार कब्रिस्तान तक का पता था, ये वाला कब्रिस्तान है, ये वाली लोकेशन. अच्छा. Everything was sorted out. अच्छा. So मतलब even before like 10 minutes before his death I was trying to sort out कि अच्छा जी मुझे इस जगह पे ये जगह चाहिए कब्र की, you know. ठीक. Don't want to go into a lot of detail about that, but Yeah. so जिस तरह वो चाहते थे सारा कुछ उसी तरह. It सही. was a Thursday. His funeral was on a Friday. He always wanted that. Mhm. So everything according to his preference. कोई मतलब उसमें. So I'm very very happy. That's बिल्कुल good. एंड तक मैंने इसको pursue किया है मतलब. Mhm. उनकी जो ख्वाहिशात थी उनको. हाँ मतलब किया. I even buried him with my own hands. Yeah. No one else was involved. No one. एक होता है ना strangers होते हैं वो
सारा कुछ करते हैं. हाँ No, हाँ that was हाँ. all me. Yeah. So, and I'm Right. glad I had that absolute honor, यार. Hmm. Absolute honor. बिल्कुल, वो जो एंड में जो मूव करते हैं काबे की तरफ, सब वो भी कुछ, सब. हाँ. everything I did my own hands. सेम. So, तो या दैट वो एक होता है, उसके बाद ना एक आपको होता है कि मैंने a मैंने lot of किया people है. can't really understand that until Yeah. unless you go through something like that या yourself. या. So that was, I'm just glad I did that. तो हाउ डू यू थिंक दिस हैज चेंज्ड यू एज एन इंडिविजुअल? बहुत फ़र्क आया होगा इसके बाद ना, मतलब इस एंड फॉर यू इट वाज लाइक अ लॉन्गर प्रोसेस ना, कि जब उनका डायग्नोसिस हुआ फिर यू पुट योर बिग बॉय शूज ऑन उसी वक्त, Yeah. और फिर Step लाइक up. हाँ, एंड देन लाइक इमेजिनिंग वो वाला चीफ जिसके साथ ऐसी ट्रॉमा ना हुआ होता, जो अपना बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, चिल कर रहा है, ये वो दैट कंपेयर टू दिस, आई थिंक बहुत ज़्यादा पर्सन डेवलपमेंट 2 सालों में Yeah. हुई होगी ना. Yeah, that guy is dead. या. This is a new me, right? हाँ. That guy is gone. That guy Yeah. cared about cars, money, motorcycles, gym, girls. Post his diagnosis, he was my own, matlab, uske alawa, it was tunnel vision. There was nothing else in my life. I didn't care about bodybuilding. I didn't care about making money. It was just full-fledged taking care of your dad, taking care of. No one else was involved. I don't want any nurses walking in my home. I'm going to do this all by myself. And he preferred that. I didn't really want anyone else sort of handling it. Or we were extremely close. Very, very close. मतलब वो बेस्ट फ्रेंड वाली बात है कि जो चीज़ें मैं अपने करीबी से करीबी दोस्तों को नहीं बताता था, वो मेरे बाप को पता होती थी. My close, he was a mentor, he was my father, he was a friend, close advisor, everything. We would talk about business, we would talk about relationships, everything. सही. वो सारा कुछ जब हुआ तो towards the end, closer to his death, there was a lot going on. I had this wedding. He had this sort of उनका था कि यार you set up your business as well. So I made the deal for the gym a week before my wedding. So as soon as the wedding happened, 3 days later I was working. I was back setting up the gym, ये सारा कुछ, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि अच्छा जी, since the wedding was the last sort of वो ना, ये ख़त्म हो गया तो there's nothing to look forward to. So I need to set up the gym before he passes away, ताकि एक बार देख जाएं. मैं अब अच्छा. personal मेरा एक वो था. सही. Unfortunately, that didn't happen. The gym was due to launch on 1st of January. 1st of January, I was in the hospital. He passed away on the 2nd of January. अच्छा. So then a month later, I launched the gym. ठीक. February 2nd. अल्फा जिम 2020 में. Yeah. सही सही. तो what's the concept behind Alpha Gym? Why is it Alpha? यार Alpha इसलिए था थोड़ा सा, it was like a homage to my father. Alpha is more like an army sort of military term. Yeah. तो थोड़ा सा वो भी था. It just sounded right. It just clicked. As soon as I heard the name, I had a wonderful business partner, उमर भाई, उमर जसवाल. उनको बहुत पसंद आया obviously, और we just went with it. It just felt right. सही. Alpha. Plus उसमें you can add a lot of things to Alpha, right? Become a group of companies. It doesn't really have to be a gym. Yeah. It can be everything. तो उस टाइम पे when you were coming up के with the concept कि मैंने जिम बनाना है और ये अल्फा नाम होगा, तो obviously इस्लामाबाद में इतने जिम्स हैं. Yeah. And you've been to many of them इतने साल किया, तो you Yes. have that experience के लोग क्या चाहते हैं जिम में. तो what was in your mind? यार मैं ये चीज़ लोगों को दूंगा. यार the number one priority, it needs to be clean. ठीक है. It needs to be absolutely clean. A lot of gyms in Islamabad are extremely filthy. There's a lot of sweat, dust. आपके डबल्स बहुत गंदे हैं. The small things, there's no attention to detail. The mirrors are messed up. There's no cleanliness, right? So the first priority was that. The second priority was the location. The location needs to be absolutely perfect. ठीक है. It needs to be central. Even if you have to pay more in terms of rent, property value, वो सारा कुछ, that's fine. You'll get that back if your facility is उस मुताबिक है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से है. So it was more of a premium facility in the center of Islamabad, clean, the best services, the best trainers, the best knowledge you can get, the best help you can get, everything under one roof, a supplement store, a basic gym. I didn't really, मुझे saunas और ये सारा इतना नहीं click करता. So I didn't really waste a lot of space on that. It's just a good, simple gym. ठीक है. आपने training करनी है, you want to transform yourself, you want to build muscle, you want to be strong, you want to learn how to fight. Alpha is the place. अच्छा, वहाँ पे क्या फाइटिंग की क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे? यार इतना कुछ तो नहीं है इक्विपमेंट का. I've got a trainer on board now. He's a अच्छा. professional fighter. Actually, he's fighting today. आज रात को उसकी fight है Saturday को मुल्तान में.
अच्छा I hope he wins. Good luck to him. It's 22, 23 professional fighter, very very good. Southpaw. सही. मेरा भी कोच वही है, मुझे भी वही सिखाता है. तो वो बॉक्सर है कि वो MMA? boxer है. अच्छा बॉक्सर, ठीक है. MMA didn't really click because I tore my ACL, so I knew कि MMA में you need a lot of knee stability in MMA. और for the longest time I was obsessed with boxing. सही. मतलब if I didn't join a gym तो I would have probably been a fighter. अच्छा. मेरा ये शुरू से मसला था कि I wanted something कि जिसमें मैं अपनी aggression सारा कुछ जो है उसी पे निकालूं. ठीक है. So boxing was always very close to my heart. My father was a boxer in the army. अच्छा. He broke his nose because of that. अच्छा. And then अच्छा. when I said कि I want to be a boxer, he was like, no. Have you seen me? मैं 24 घंटे वो Zynosine और वो use करते थे because he had a slightly इस तरह नाक उनका ना damage हुआ था थोड़ा. ओहो. So अच्छा. it didn't really allow me to sort of go Right. into boxing. लेकिन छुप छुप के जाता था, but obviously if you don't have family support, you can't do anything. There's no such thing as a कि अच्छा जी ठीक है मैं कर लूँगा, ऐसे नहीं होता. So I got into a traditional bodybuilding gym instead. ठीक ठीक. तो अभी Usama on board है. Usama is obviously very very good. You can have all the fancy equipment you want, but if you don't have the basics down right, your footwork, defense drills, punches, posture, छोटी मोटी चीज़ें, so you're not really going to be a good fighter, right? It's not just about punching the bag doesn't really hit back. Sparring sessions वो सारा कुछ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे ही ऑन बोर्ड होगा तो I'll add more equipment. अभी तो इस जस्ट एवरलास्ट का वो हाइड्रो बैग नहीं होता, हाइड्रो स्ट्राइक बैग वो है. सही है. बाकी हम ड्रिल्स जो हैं खुद ही करते हैं. वी अटैच लिटिल थिंग एक कोने से दूसरे कोने में. वी प्रैक्टिस आवर हेड मूवमेंट और वो अच्छा. सारा कुछ, स्किपिंग. सही. There's a lot of weight training involved. There's a lot of sprinting involved. A lot of cardio, conditioning drills, battle ropes. So it's a good boxing workout for beginners at least. आते साथ ही तो कोई माइक टाइसन नहीं बनेगा ना. It's gonna take some time. तो अभी मतलब आ रहे क्लाइंट्स वो स्पेसिफिकली वांट टू लर्न यार बॉक्सिंग? अभी मैंने भी हाँ clients आ रहे हैं. हाँ. Haven't really launched it उस तरह. I haven't really announced on the page either. अच्छा सही. तो वो थोड़ा सा उसका मार्केटिंग कंटेंट आ जाए एक बार मेरे पास, and then I'll make it public, announce it, and then hopefully the clients come in. ठीक If they है. don't, तो I'll just keep training myself. सही है. है interest है. I've seen some interest, especially young guys, 19, 20-year-olds. हाँ. They have an outlet, right? Rather than being on the streets, smoking weed, doing drugs, come to the gym, train hard, fight, learn how to fight, box, lift some weights, do something positive with your life. Channel your aggression into something worthwhile, right? Rather than taking it out on someone on the streets, yeah, your family, your friends. Yeah, that's a good thing to have. तो शुरू में I mentioned you're one of the few natural bodybuilders that I know. तो अभी भी लोग रोते हैं, अभी भी क्या पिक्चर्स के नीचे हाँ, टीकों के वो बना देते हैं, बट हाँ वो सही चलता है, रहेगा. ठीक है. हाफ नेटी लाइटिंग जिसको बोलते हैं. Pretty तो much. व्हाट्स योर मोटिवेशन टू स्टे नेचुरल कि यार मैंने इसी तरह ही करना है? यार मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं इधर तक भरा हूँ. आई माइट डू समथिंग later on in the future. I think I'll sort of go because I don't think I can grow. I think I've explored my genetic potential. इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता. Especially the last transformation, तो I ended up in the hospital, right? Twice. What happened? यार so basically I'll start off from the gym. The gym launched in February 2nd, 2020. A month into it, March में COVID came in. So my business completely shut down, right? So मैं काफ़ी stressful हो गया कि यार I've invested a lot of money into this. There's a lot of hard work into this. तो what to do now? तो मुझे था कि कोविड्स ना होता ना, आप अच्छी उम्मीद लगा के रखते हो कि यार 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा. It'll be all right. That didn't happen. It took months. So eventually I decided कि अच्छा यार ये मैं थोड़ा बहुत साथ साथ कर तो रहा हूँ. The gym is afloat. All I need to do is survive. Don't quit. Don't give up. आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह. क्योंकि मेरे साथ यार I'll be very honest, वाले साहब की बहुत दुआएं थी. मैं towards his last stages ना उन्होंने मुझे सीधे बोल दिया था कि whatever you do, I have no doubt you'll be 100% successful. तो मुझे था कि there's no way this is gonna fail, right? So I just need to be patient, keep working hard, keep my head down, and I'll push through. जब वो सारा हो गया, I realized कि अच्छा यार this is out of my control. I worked on the best feasibility. I found the best location, the best equipment. I've got the best partners, the best trainers, everything. Everything sorted out. This is something that is completely out of my control. So what's the best move? The best move is कि पिछले 3 सालों में you've been taking care of your father, you've neglected yourself. It's time to build up. So अक्टूबर में 2020 के अक्टूबर तक मैंने खींचा. मुझे था कि चलो अक्टूबर तक तो कोविड ख़त्म हो जाएगा ना, राइट? उस टाइम यही उम्मीद लगती थी.
जब वो बात आगे जाती रही तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार अच्छा मे बी आई शुड टेक दिस टाइम टू बिल्ड माई सेल्फ. सो 25th October को I got extremely serious with the gym. यार it's time to build back. I had lost a lot of muscle, I had lost a lot of weight. क्योंकि obviously फिर आप meals और इन चीज़ों का ध्यान तो नहीं देते. You're taking care of someone, right? You're primary caretaker. और फिर you spend a lot of time in the hospital. Chemo sessions are very long. He went through 26 chemo sessions. 26 chemo sessions are काफ़ी टाइम लगता है उनमें. You don't really have time to do anything else. You have to pay attention, right? So I was fully devoted to my father, nothing else. जब वो सारा कुछ क्लियर हो गया आई न्यू कि अच्छा यार नाउ आई नीड टू सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन दिस. तो अक्टूबर में मैंने स्टार्ट कर दिया एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पेंट ऑफ रेज, a lot of pent up frustration, a lot of anger, a lot of grief, a lot of sadness, and that was good, right? That sort of helped me. वो जब मैंने जिम शुरू किया with that intention कि अच्छा यार now I need to build up to that, helped tremendously. वो मैंने सारा का सारा वो एक होता ना उसी के अंदर चैनल कर दिया. ठीक है. So I started training for मतलब आई जाता रात को कि किसी से बात भी नहीं करना, आइसोलेशन बिल्कुल. I'd go at 10 and I'd leave the gym at 3. So I pretty much locked myself up in the gym. अच्छा. So I train from 10:15 मतलब जाते साथ लाइटें ऑन करते गाने लगाते जो भी whatever. 10-15 मिनट के बाद I'd start training and I'd end my session at 3. क्या करते थे 5 घंटे Training. किस तरह? What type of training for 5 hours? यार पुश पुल लेग्स था. हाँ, एक दिन में? नहीं सारा कुछ एक दिन में नहीं. लग ऐसे So रहे, हाँ. for example it was a push day, right? ठीक है. पुश में क्या था? मेरी थ्योरी ये थी हाँ. कि I'm not gonna be huge, हाँ. right? So my biggest asset is me being extremely lean. Shredded, yeah. Extremely lean. I've lost some muscle. So I have an advantage कि वो जो muscle मैंने lose किया I'll gain that like that, right? So I started bulking up. I went up to like 3,000, 3,500, 4,000 calories daily. शुरू में कम थी. And जब मुझे feel हुआ कि मेरा metabolism सही तरह catch up कर रहा है तो मैं calories बढ़ाता गया. 4,000 calories पे आ गया. I went from 70 kg to 83 in a matter of 3 months. सही है. और उसमें 6-7 kg तो लूज हुआ मसल था. सो इट ऑल केम बैक एंड आई जस्ट गॉट बफ, राइट? जनवरी में जब फोटोशूट हुआ एक बंदे को मैंने बुलाया, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था रेहान, इज इन ऑस्ट्रेलिया नाउ. उसने शूट किया. आई लुक्ड एट दैट शूट, आई एम लाइक आई एम मोटा हो गया यार, आई हैव गेन्ड सम फैट. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अच्छा नाउ आई नीड टू कट डाउन. ठीक है. So that's when I started cut down. वो जो 5 घंटे का वर्कआउट था यार, that was more therapy because there was a lot of steam. I needed to sort of, you know, that was my way of blowing off some steam कि अच्छा यार CC के अंदर. Was it actual 5 घंटे का वर्कआउट कि वैसे भी वहाँ बैठे रहते थे कि यही रहना है? नहीं था यार, नहीं पता. नहीं था. अच्छा, बैठते नहीं थे, पता नहीं था. वर्कआउट होता रहता था. I was literally resting for 15 seconds. And it wasn't 3 sets or 4 sets of 15 reps. No, fuck that. It was 10 sets of 40 reps of 15 seconds rest. इस तरह. Sometimes I lost count कि मेरे कितने सेट हुए हैं. I would indulge into an exercise and forget कि कितने सेट्स हो गए. अच्छा. So that was my therapy. I love training यार. Training is like my मतलब I can't live without training. सही. So training was my therapy और मैं बस घुस गया उसके अंदर. So it was push pull legs. I figured out कि अच्छा जी अगर push pull legs है, a lot of people इस तरह एक बंदे का typical leg day है. They'll train their quads, they'll train their hamstrings, and then they'll train their calves, and that's it, right? That's 99%. मेरे ज़हन में था कि what about the other muscles that you're ignoring that you don't even know exist? So if जिस तरह मेरा leg day, it's quads, hamstrings, glutes, calves, gastrocosolius को अलग-अलग करके. Then you've got inferior tibialis, shins basically. Then you've got your adductors, then you've got your abductors, hip flexors. That was my leg day. Instead of training 3 muscle groups like your quads, hamstrings and calves, I was training 6-7. So वो attention to detail added a lot of proportion to my physique और से वो detail बहुत ज़्यादा enhance होना शुरू हो गई. ठीक वो है. 5 घंटे के workout इसलिए होते गए. सही. And I didn't really care. I had nothing better to do. COVID था, business बंद था. घर जाके feeling sorry for yourself isn't really gonna help, right? Might as well push, right? और उसके बाद when I went home, तो I didn't really have time to get depressed or sad or anything. I was like खत्म हुआ था बिल्कुल. So I would go home, eat, watch something, sleep. तो मैंने वो अपने ऊपर वो होने नहीं दिया कि यार एक होता ना आप बैठे रहो 2-3 घंटे तो you start feeling sad, depressed. वो situation होने ही नहीं दी मैं. So I practically lived in the gym. Even on Sundays I'd just go into the gym and just sit there.
and watch people train, learn something, pick up cues. Oftentimes beginners teach you a lot of things. Beginners will do basics और आपको realize होगा कि यार I should be doing that, that's gonna help me. तो वो इस तरह होता गया. फिर obviously वाले साहब का भी बहुत वो था, so that helped tremendously. मतलब I would start set पे as soon as you get to let's say 15 reps, so all of these thoughts started coming in, all of these memories, में अच्छी memories भी थी, बुरी memories भी थी. तो वो जब आप चैनल करते हो उसमें, तो you go from 15 reps to 40 reps. That breaks a lot of barriers. You realize कि अच्छा जिधर मैं 15 पे छोड़ा था, I had the potential to do 40. So you keep on, वो limit का बार आप बढ़ाते रहते हो. I realized since I've been through something very traumatic, at least for me, it was very tragic losing my father. So I realized that I need to work on three things. I need to work on my mentality. I need to work on my physical strength, and I need to develop myself spiritually. So the very first thing that was in my hand was the gym. So physical strength तो उससे develop होना शुरू होगी. Mental strength के लिए I started following all these people. I started reading books. I started listening to a lot of Kobe Bryant videos. मैंने उन दिनों जब Kobe Bryant पे for some reason I just looked up Kobe Bryant क्योंकि उसकी कुछ अर्सा पहले death हुई थी. 2020 was a harsh sort of a year. Yeah. So it was talk of the town. Kobe Bryant की death हो गई. I looked him up and I started watching all of his videos. And there was this one video where he said, this video का title था No Regrets. The video starts with Kobe Bryant sitting on a chair and he goes, my philosophy was a simple one. Rudy was one of my favorite films growing up. After watching that film, I come to understand that if I could work that hard every day, being blessed with the physical tools that I have, what would my career be? समझ? So that really clicked with me कि अच्छा यार ठीक है, मेरे पास भी पूरे genetics नहीं है. What if I train like an absolute animal? What if I forget everything? Tunnel vision, train 5 hours a day, 6 hours a day, eat right, gym मेरे पास अपना है. मतलब you have absolutely no excuse. जिम होता है ना 10 बजे जिम बंद हो जाता है, तेरा अपना जिम है ब्रो. सो यू हैव नो एक्सक्यूज, यू गॉट नथिंग एल्स टू डू. आपका काम भी यही है, देयर इज नो जॉब, यू डोंट हैव टू गो टू वर्क, दिस इज योर वर्क. सो दैट पुश्ड मी माइल्स अहेड. और फिर उसकी आगे बातें यही थी कि यार इफ समवन इज ट्रेनिंग एन आवर compared to someone who's training for 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, who do you think has an edge? Person who's training more, right? इसमें don't you think एक point of diminishing returns आया है? यार दैट मुझे इनिशियली ये किताबी बातें मैं बहुत पढ़ता था. आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट कृष्ण थबोड़ा. कृष्ण थबोड़ा इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस. बहुत सारे लोगों ने कहा यू वॉन्ट रिकवर, यू वॉन्ट गेट इंजर्ड. मज़े की बात, मैंने 5-5, 6-6 घंटे ट्रेन किया है एंड आई हैव जीरो इंजरीज. सो अगर मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे के वर्कआउट के बाद रिकवर कर जाऊंगा, गेस व्हाट, यू कैन रिकवर फ्रॉम a 1 hour workout. But if you think you can recover from a 4 hour workout, guess what? You'll recover from a 4. It's all about mentality, yaar. If you tell yourself you can't recover from a 4 hour workout, you won't. If you tell yourself you can, you will. 100%. A lot of these guys who talk about burning out, या overload हो गया है, या overtraining हो गया है, I don't think they've trained for 5 hours a day, ever in their life. So how do they know? ओवर ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक 5 घंटे जिम में लगा रहे हो, तो उसमें पहले 2-3 घंटे जो होंगे मुझे इस तरह लगता है कि वो होंगे फिट, और बाकी 2 जो होंगे वो दैट्स जस्ट फॉर योर मेंटल, एज अ मेंटल आउटलेट कि यार बस नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने ये भी करना है, आई वांट टू डू दिस और ये वाली. यार पता नहीं फॉर सम रीजन मैं आई वाज इन अ वेरी डार्क वो. हाँ, तो मुझे तो आई डिडंट रियली केयर, आई वाज ऑल आउट. मतलब इफ आई डू अ सेट इन द बिगिनिंग, आई हैव द सेम इंटेंसिटी फॉर द लास्ट सेट. हाँ, आई डोंट केयर. मतलब मैं उस टाइम savage mode में था. I didn't really care. ठीक. So I still think those were my best workouts, bro. And training started not in the gym. Training started as soon as I woke up. अच्छा, उसमें क्या था? Small things, subtle things. People ignore the subtle things. Small things that you do every day. So I'd wake up in the morning and I'd do calf raises as soon as I woke up. And then in the shower I'd do vacuums. अच्छा. Right? And then उसके बाद go to the gym, don't talk to anyone, don't do anything, right at it. Keep training, take a break, eat something. The diet was on point. मुझे diet का था कि obviously if the diet is not on point, you're not going to make a lot of progress. So the diet was on point. So I trained for 2.5 hours, take a break, eat, rest for about half an hour, back at it again. Train, rest, eat, उसके बाद chill, boys आ गए, दोस्त आ गए, थोड़ी देर उनके साथ बैठे घर. As soon as I come home, training doesn't end.
I stand in front of a mirror, I take my shirt off and I pose and I practice my posing. And a lot of people think that's for aesthetic reasons. It's not. Posing helps you control your muscles. Posing helps develop your mind muscle connection. So I would hold poses in front of the mirror. फिर vacuums करता था. Then I'd lay down on the floor or I'd do crunches. Movie देख रहा हूँ तो crunch. मतलब it was training throughout the day and I didn't care about anyone saying हाँ जी ये क्या ज़िंदगी है पूरा टाइम ट्रेन करते रहते हो. I did not go out. There was no balance in my life. I don't understand how people have balance or how people sort of pursue करते हैं ना कि यार balance होना चाहिए, जिम भी जाओ, social life भी हो. I didn't give a shit. It was all about the gym. That was my soul. I wanted to be the best at that वो. Right. So मतलब उसमें और फिर साथ में कोबी ब्रायंट को सुन रहा था. I had this other guy for confidence. और उसमें जो I divided categories मैंने बना ली. कि all out work ethic, Kobe Bryant, all out confidence, Michael Jordan, Conor McGregor. I would watch these videos. Hey, then it came to business, finances, and handling all of that, developing your personality. Then I started reading books. I started watching Napoleon Hill a lot. I started listening to his. उसकी एक बड़ी अच्छी वीडियो है 1 घंटे की. And it's called. नाम मुझे उसका भूल गया. But it's basically 13-14 chapters where he sort of tells you how you develop yourself, how a positive mindset is very important, how enthusiasm is very important, how having a strong faith is very important, how you need to be definite with your purpose in life, how you need to know exactly what you want from life. His video starts with whatever the mind can conceive, the mind can achieve, right? So I repeat that to myself. सारी psychological tricks नहीं होती, वो use करता था, auto suggestion, रात को headphones लगा के, मतलब समझो, I tried everything. So that was a process where I just kept on developing myself, videos dekhta raha. I was obsessed. I kept on posting all of those things and it wasn't really for the Instagram audience, it was for myself. वो videos अभी भी मैंने highlights में save की हुई हैं. So whenever I feel down, मैं वो highlights चला देता हूँ. Right. And then उसमें आगे Conor McGregor खड़ा होता है और वो हो जाता है. Right. It's like training. This is like more than someone who is competing. हाँ. Or a trophy for money. मतलब it was all out. कोई motivation नहीं थी. Obsession था. Obsession. Nothing else. There was no balance. Not at all. No time for social gatherings. My friends started complaining. बाहर नहीं निकलता. मैं कहता था तुमने मेरे से मिलना है, जिम आ जाओ. मैं बाहर नहीं आ रहा. और वो अभी भी इस बात पे मेरी एक बड़ी बुरी रेपुटेशन है. मैं बाहर नहीं जाता. I don't go to restaurants. I don't go to coffee shops. Part of the reason is because यार I was busy taking care of my father. I didn't really want to go to a place where people are enjoying themselves having coffee. मुझे तब चढ़ती थी, सीधी सी बात है कि यार I'm going through all of these वो और ये मम्मी डैडी boys discussing their shitty first world problems कि oh God पापा ने पैसे नहीं दिए. I was that kind of उस stage में था मैं. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है थोड़ा सा बेहतर हो गया, बट उस टाइम मुझे था कि nothing else matters right now. You just need to build up yourself. ठीक है. So kept on doing that. That obviously led to tremendous growth mentally, physically मैं बहुत strong होता गया. Cut वगैरह शुरू कर दिया मैंने. I knew कि if I cut abruptly within the span of like 3 months, I'm going to waste a lot of muscle. So I needed to take my time. I took a year. So the cut started in January and the cut ended in February. Of next year. Sorry. A lot of people give up within the first 3 months कि यार कर रहा हूँ नहीं हो रहा. No, you need to keep at it. You need to, yeah. keep going. Natural bodybuilding है यार. तो फिर बीच में you mentioned that you went through something. Yeah. बात कहीं और चली गई लेकिन तो वो क्या था and what happened and what do you think was the reason for that? Obviously 5 hours अब मैं ठीक है, it helped me. बहुत strength develop की. I built a tremendous physique. I always had this condition called ventricular tachycardia. I didn't really know at the time. When I was a kid, I used to have episodes, but no one was really able to figure out. I went to the hospital. क्या होता था एपिसोड में? यार heart rate बहुत तेज हो जाता था. ठीक है. So my heart rate would go abnormally fast to a point where breathing was मतलब troublesome. ऐसे बैठे बचपन में? नहीं बैठे नहीं, exertion. अच्छा ठीक है. So I was a kid. I'm playing around, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, जो भी कैदी खेलते थे बीकन में. हाँ. तो वो थोड़ी देर बाद heart rate बढ़ जाता था, but it would settle. So I didn't really think much of it. ठीक है. Until एक point आया कि मुझे वाले साहब एक जनरल चेकअप के लिए गए शिफा. तो डॉक्टर ने कहा कि यार there's something wrong with your kids. And he obviously panicked कि यार ये क्या बात हुई, मेरा young बच्चा, इसको क्या हुआ है. So they ran a couple of tests. They weren't able to figure it out. तो जब मुझे वो होता भी था, मैं घर वालों को बताता था, घर वाले कहते थे नहीं, you just easy हो जाओ, it's all in your head, since वो डॉक्टर ने तुम्हारे आगे mention किया. That's why you're sort of उसके बारे में paranoid हो रहे हो तुम. So I left it. I didn't really think about it. Went to the UK.
Actually, UK में I was training even harder than this. So there was training, there was conditioning drills, there was treadmill work, there was rowing. So उधर भी मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ. 2016 में I had my first episode, a proper episode जिसमें I realized कि oh there's something wrong. That was in Metroflex. I was doing heavy back work. मेरे साथ आदिल था, आदिल वहाँ पे होता था. And I got to the fourth round or something and I was punching और एकदम I felt कि my heartbeat dropped for a bit and then it went crazy above. मतलब 250, 300. 300 पे you can't really breathe. आप ऐसा समझो कि आपने ट्रेडमिल पे स्प्रिंट मारी है और वो स्प्रिंट जैसे ही ख़त्म हुई है तो यू कांट ब्रीथ नाउ एंड यू नीड ऑक्सीजन राइट. स्प्रिंट में तो बंदा यू हाफिंग एंड पफिंग. सो वो जब हुआ तो मैंने आदिल को बताया कि यार आई कांट ब्रीथ, ये इशू हो रहा है और मैं आई कैन फील माई हार्ट रेट सॉर्ट ऑफ, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बाहर आ जाएगा. तो उसने कहा टेंशन ना ले, डू सम थोरासिक एक्सटेंशन स्ट्रेचेस एंड यूल बी ऑलराइट. अब यूर अ गाय राइट, यू नॉट गोना एक्ट लाइक अ पुसी. मैंने कहा ठीक है. So I did all of those things and fortunately after 5 minutes it normalized. अब this is 2016. 2016 में मैं फौजी भी जा रहा हूँ, there's a lot going on in my life. I didn't really care about it. मैं घर वालों को भी नहीं परेशान करना चाहता था, मैंने किसी को बताया भी नहीं. 5 minutes it happened and then it cleared up. उसके बाद I got busy with life. वाले साहब का diagnosis, training वैसे ही छूट गई फिर. When I came back to training in 2020 full fledged, तो मुझे पहला अटैक हुआ, पहला एपिसोड हुआ. अटैक तो अटैक ही था anyway. पहला एपिसोड हुआ आई गेस 2021 में. सो दिस वाज माय कट हैड स्टार्टेड इन जनवरी 2021 एंड दिस हैपेंड इन अप्रैल. और मैं कर रहा था, आई थिंक आई वाज बॉक्सिंग. तो वो हार्ट रेट तेज़ हो गया मेरा और वो एक छोटा सा मैंने ऑफिस बनाया है जिम में, वहाँ पे 2 शोज बैठे हुए थे, जिम वाज एम्प्टी. मैं इसी तरह रात को लेट ट्रेन करता था तो इतने ज़्यादा लोग नहीं होते थे. आई वेंट टू द ऑफिस एंड आई टोल्ड देम कि यार देयर समथिंग रॉन्ग, आई कांट ब्रीथ, और मैं अगर पीछे बैठता ना तो मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊँगा एंड आई विल पास आउट. तो लगा वो ईजी हो जा, क्या हो गया, रिलैक्स कर रही है वो, बिकॉज आई डेंट रियली अंडरस्टैंड इट ईदर राइट. आफ्टर 15 मिनट्स बिल्कुल ठीक हो गया. आई रियलाइज कि अच्छा यार सिंस आई एम ट्रेनिंग 5 hours 6 hours a day and eating less, I'm on a cut deficit में हूँ, तो मे बी माई बॉडी नीड्स अ ब्रेक. इधर साथ ही मुझे एक माइंडसेट पे आया कि नहीं यार, यू डोंट रियली नीड अ ब्रेक, यू नीड पुश. केप्ट डूइंग दैट. फिर अटैक हुआ आफ्टर अ मंथ और 2. दैट लास्टेड फॉर अबाउट हाफ एन आवर. अब तक दोस्तों को भी पता है कि अच्छा ये रूटीन है, इसको थोड़ा सा बीच में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, खैर है. वी डिडंट रियली थिंक टू मच अबाउट इट. जब वो आधा घंटा गुजर गया, वो हार्ट रेट नॉर्मलाइज हुआ, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग, दूसरी दफ़ा हो रहा है, सो मे बी आई नीड टू बैक ऑफ. आई टुक 4 days ऑफ, दिल पे पत्थर रख के बड़ी मुश्किलों से 4 days ऑफ लिए. आई केम बैक टू द जिम, एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स वर्किंग, सब ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है. फिर मैं एक दिन बैटल रोप्स कर रहा था, बैटल रोप्स करते करते फिर हो गया. दिस टाइम इट वेंट अप टू एन आवर. 1 घंटा 300 पे रहा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा. हाँ. एट दिस स्टेज मेरे दोस्तों ने कहा यार हॉस्पिटल चलते हैं. मैंने कहा नहीं यार, पहले भी तो ठीक हो जाता है, अभी भी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. तो आई केप्ट ऑन वॉकिंग. घंटे बाद ठीक हो गया, और घंटा मैंने उसको बर्दाश्त किया बड़ा गंदा से. वो सारा कुछ हो गया. फिर मैंने चेकअप्स कराए अपने यार. फिर आई वेंट टू डिफरेंट कार्डियोलॉजिस्ट्स, एको वो सारा कुछ कराया, ECGs कराई. नथिंग केम अप, माई हार्ट इज़ परफेक्टली हेल्दी, एवरीथिंग गुड. वेंट बैक टू ट्रेनिंग. फिर मैं थोड़ा सा बैक ऑफ कर गया इन सेंस कि अच्छा यार इतना ज़्यादा पुश नहीं करता, मे बी आई एम पुशिंग टू हार्ड, गेटिंग लीनर. आई वॉज सिंगल डिजिट बॉडी फैट, ईटिंग 2000 कैलोरीज. मुझे था कि देयर इज़ अ लॉट स्ट्रेस ऑन द बॉडी, तो इस वजह से हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई, वीडियोस बन गई, पिक्चर्स हो गई, सारा कंटेंट शूट हो गया, सब कुछ हो गया. दिस इज़ जनवरी ऑफ 2022 राइट. बात आ गई फरवरी पे, 5th of February का हमने सोचा था कि सिंस ऑल द शूट्स आर डन, लेट्स डू वन लास्ट शूट, क्योंकि पीक वीक के बाद आपके पास यू हैव अ विंडो वे यू ईट, यू स्टिल लीन, वेरी वेरी लीन, एंड योर बॉडी जस्ट एक्सप्लोड्स राइट, इट बिकम्स. तो मेरा जो बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा वीडियोग्राफर भी है, सैयद अदील, उसने कहा कि यार लेट्स डू अ बेन सॉर्ट ऑफ वो फोटोशूट, पेन थीम फोटोशूट. यू टेक शर्ट ऑफ, यू पोज, यू वेयर द मास्क. यार ये अच्छा आइडिया है यार, क्योंकि होता है ना पीक वीक के बाद आप कहते हो जब आप यू स्टार्ट ईटिंग, देन यू लाइक यार ये your body responds right. This is a good idea. You get even more vascular, fuller, you have more strength, you look better, the skin looks better, your face looks better. फिर उसमें क्या हुआ? उसने कहा यार let's do that. मैंने कहा okay, why not. So
उस दिन I did deadlifts and I did about 8 sets of deadlifts or something. क्योंकि उसने कहा कि मुझे, उसके भी तो नखरे थे ना, उसने कहा जी मैंने इस एंगल से ये शूट करना करना है, है, ये, फिर मैंने इस एंगल से शूट करना है, फिर मैं यहाँ से शूट सही करूँगा। थकाते हैं। हाँ, तो अब मैं 3 प्लेटें डेडलिफ्ट किए जा रहा हूँ, मेरा हार्ट रेट थ्रू द रूफ है, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट रियली केयर। आई एम लाइक कि अच्छा अब तो मैं नॉर्मल भी खा रहा हूँ तो बॉडी पे इतना स्ट्रेस नहीं, आई कैन हैंडल इट। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो और कोई एक्सरसाइजेस तूने करनी है, तूने पंप अप कर लिया तो लेट्स स्टार्ट शूटिंग। मैंने कहा ऑलराइट फाइन, वेयर इज द मास्क, वी गॉट अ वेरी नाइस अंडर आर्मर सॉर्ट ऑफ थिक। कोविड के दिन थे, तो सॉर्ट ऑफ हमें बहाना मिल गया कि अच्छा यार वो मास्क पहन के मे बी आई विल पोज एंड वील गेट सम गुड शॉट्स। आई पुट ऑन द मास्क और मैंने पोज किया, आई डिड अ फ्रंट डबल बाइसेप एंड अ वैक्यूम एट द सेम टाइम। So I did this and a vacuum and I'm ठीक है। squeezing everything, holding my breath. There's a mask on my face. I've already done 8 sets of deadlifts. My heart rate is already at 190. वो जब मैंने किया, I held it. This is on video by the way. वो वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की। वो जैसे ही हुआ तो मुझे फील हुआ my heartbeat dropped and it just went bad shit crazy एकदम से। तो मैंने वो मास्क उतारा and I just walked back और उसने मेरे से पूछा क्या हुआ है? मैंने कहा दोबारा से टैकीकार्डिया हो गया। तो उसने कहा अच्छा चल ठीक है, इजी हो जा, रिलैक्स, ब्रीथ, लेट्स गो आउट, बाहर चलते हैं, सिगरेट पीते हैं। अच्छा, एट दैट टाइम यू नो कि ये दिस इज मतलब मुझे ये मसला टैकीकार्डिया हाँ, देन आई स्टार्टेड लुकिंग अप गूगल। अच्छा, पता लग गया था। आई हैव अच्छा। टैकीकार्डिया एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि डायग्नोज ऑफिशियली नहीं हुआ था। ऑफिशियली मुझे भी नहीं था, मुझे था कि मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ तो आई एम बेसिकली सेल्फ डायग्नोजिंग माई सेल्फ, तो दैट्स नॉट रियली वाइज इज इट। सो आई डिडंट रियली नो, बट हमने उसको एक टर्म देना शुरू कर दी कि अच्छा यार इसको टैकीकार्डिया होता है। ठीक है। We went outside, my heart rate is at 300, I can't breathe, I'm about to pass out, closest thing to death. मतलब you feel like you're gonna die right there. मतलब मैं उसको इस तरह की भी बातें बोल दी, मेरी फैमिली को बोली आई लव देम, ये वो इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई, मजाक में, समझ रहे हैं हम, अभी शुक्र लगा रहे हैं। तो उसने कहा यार अभी इस पॉइंट पे सिर्फ मैं और वो हैं जिम में। उसने कहा यार डू यू वांट टू गो टू द हॉस्पिटल? मैंने कहा पहले भी तो ठीक हो जाता है, अभी भी ठीक हो जाए, आई जस्ट नीड टू सॉर्ट ऑफ पुश थ्रू। तो मुझे बर्फ़ का एक वो दे दो। सो आई हैड दिस फिल्ड अप फ्रीज़र में एक वो पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मैंने इधर रख लिया। दैट फॉर सम रीज़न फेल्ट गुड, तो मैं वो लेके वो हो गया। हार्ट रेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सांस बहुत ज़्यादा, आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल ब्रीथिंग, लॉट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आई हैड अ लॉट ऑफ पेन इन दिस एरिया। अच्छा। माई नेक गॉट एक्सट्रीमली स्टिफ, माई ट्रैप्स गॉट एक्सट्रीमली स्टिफ, और मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरी छाती पे किसी ने एक बहुत कोई हैवी ना लोड रखा हुआ है। So if I sat down, I felt I'm going to pass out. If I lay down, so there is a guarantee I will pass out. So what I did was I kept on walking, very small steps throughout the gym. I did that for 2 hours, 2 घंटे। अच्छा। 2 घंटे जब मैं करता रहा, फिर मुझे दोस्तों ने कहा कि यार खुदा का वास्ता चल चले। मैंने कहा यार तुम मुझे किस तरह लेके जाओगे? अगर मैंने स्टेज नीचे से उतरने हैं ना और तुम मुझे स्टेज के लिए उठाओगे, if I do this, You'll pass out. I'll pass out. हाँ। Because it's a very drowning feeling. It's very hard to explain. तो उसने कहा यार तू जिस तरह कहेगा हम कर लेंगे, बट वी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, दिस इज़ टू मच। 2 घंटे हो गए हैं, तेरा हार्ट रेट 300 पे है, सो यू नीड टू फिक्स दिस। वो घड़ी भी मैल फंक्शन करने लग गई, हार्ट रेट बताती है ना। उसने कहा नाउ इट्स टाइम। मैंने कहा अच्छा चलो। फिर वो जो मेरे जिम के बाहर स्टेज हैं, इट टुक मी अबाउट हाफ एन आवर जस्ट टू गेट ऑफ दो स्टेज। मुझे था कि मुझे उठाना नहीं, अगर उठाओगे ना तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। सो आई नीड टू डू दिस स्टेप बाय स्टेप। तो एक स्टेप लेके मैं वो सीढ़ियाँ उतरा, दोस्त की गाड़ी में बैठा, उसको मैंने बोला तेज़ ना चलाई, नीड टू ड्राइव वेरी वेरी स्लो। वी ड्रोव वेरी वेरी स्लो। उसने पूछा कौन से अस्पताल जाना है तूने? मैंने कहा ठीक, मुझे कुलसूम, दैट्स द नियरेस्ट। पिम्स मैंने नहीं जाना, थैंक यू वेरी मच। कुलसूम में गया, कुलसूम के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया। अब मैं फुल वर्कआउट करके, जैक शर्ट मैंने पहनी हुई है, और बंदा मेरे से पूछा भाईजान क्या हुआ है, इमरजेंसी किसको है? उसने कहा जी इस बंदे को, इसका हार्ट रेट बहुत तेज़ हुआ है। तो उसने फ़ौरन से भागना शुरू कर दिया। एंड प्रॉप्स टू कुलसूम यार, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है उनका। उसने फ़ौरन मुझे लटाया, उसने कहा यार क्या हो रहा है एग्जैक्टली मुझे बताओ। मैंने कहा ये सिम्टम्स हैं। उसने जैसे ही कनेक्ट किया, उसने देखा ऊपर, उसने कहा आपका हार्ट रेट बहुत नॉर्मल हुआ है, क्या है आपने? यार मैं ट्रेनिंग करता हूँ। उसने कहा अच्छा चलो मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर भी शॉक्ड। उसने कहा अच्छा चलो आई गिव यू सम मेडिसिन फॉर दिस, बट देयर इज़ अ हाई चांस वी नीड टू कीप यू फॉर द नाइट। मैंने कहा कोई सीन ही नहीं है, मैं डॉक्टर से लड़ने लग गया। मैंने कहा मुझे 1 घंटे में ठीक करो, मैंने घर जाना है। क्यों? I didn't want to tell my family यार। अच्छा, My family was सही है। already going through, तो मैंने उनको नहीं बताना चाह रहा था कि आई एम इन द हॉस्पिटल। अस्पताल का नाम सुन के घर वाले वैसे यार घबरा जाते हैं। हाँ, आफ्टर समथिंग लाइक उसने दैट। कहा बेटा कोई सीन ही नहीं है तुम्हारा, अच्छा। इफ यू वांट टू सर्वाइव यू नीड टू स्टे द नाइट इन द हॉस्पिटल, सो यू आर स्टेइंग इन द हॉस्पिटल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, शट अप एंड ले डाउन।
लिटरली उताप गई मेरे पे। फिर उसने कहा कि मैं मेडिसिन दे रही हूँ, मे बी दिस वर्क्स। उसने मेडिसिन दिया, डिडंट वर्क। फिर उसने कहा यू नीड टू कॉल योर फैमिली। मैं कहा आई एम नॉट गोना कॉल माई फैमिली। उसने कहा देन यू नीड टू साइन अ कंसेंट फॉर्म। मैं कहा किस चीज़ का कंसेंट फॉर्म? उन्होंने कहा कि वी गोना शॉक यू। मैंने कहा अच्छा। ना यार। हाँ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा बिकॉज इट इज़ सो एबनॉर्मल दैट मेडिसिन कांट रियली कंट्रोल इट, सो वी नीड टू रीसेट इट। सो यू नीड टू साइन अ कंसेंट फॉर्म कि इफ समथिंग हैपेंस टू यू वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं कहा ठीक है लाओ। मैं साइन कर दिया और कलमा पढ़ के मैं लेट गया। उसने कहा कि मैंने कहा सेडेट करोगे? उसने कहा सेडेट हम करेंगे, तो डोंट वरी, पेन नहीं होगी। उसने मुझे सेडेट किया, आई वाज हाफ अस्लीप। ठीक और है। उसने मुझे अच्छी तरह याद है, उसने यूं करके क्लियर किया है, यूं रखा है। द फर्स्ट शॉट मिस्ड। सिंस आई वाज हाई ऑन सेडेटिव्स, आई हाँ। डिडंट रियली रियलाइज। आई वाज लाइक दैट वाजंट सो बैड। मिस्ड क्या मतलब? फॉर सम रीजन इट डिडंट वर्क। अच्छा ठीक। सो उसने कहा ऑलराइट सेकंड अटेम्प्ट। उसने फिर इस तरह कुछ किया। उसने कहा सेकंड अटेम्प्ट। उसने जब यूं किया, ठक, लाइट्स आउट। and I just went up on the bed like that and came down and smashed something. मुझे आज तक पता भी नहीं उन्होंने मुक्का किसको मारा था. That was very painful. Burned my chest. It was a shock, right? और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और दोस्तों ने फिर मुझे कहा फ्लैट लाइन वेंट यूं एंड देन आफ्टर 3 seconds 300 पे थी, 300 से वो एकदम ज़ीरो हुई है और ज़ीरो के बाद इट वेंट उन्होंने लिटरली एंड देन वो आई वेक किया अप है। इन द आईसीयू. उन्होंने लिटरली वो किया है यार, कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करो सही हो जाएगा, वो किया है। रीसेट बटन दबाया मेरे पे. Damn. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप इन द आईसीयू, हाँ। तो आई फेल्ट आई वाज इन अ fight for like 10 hours straight. I was completely dead. I couldn't move a finger. मेरी एक तस्वीर भी है जिसमें मैं यूं बैठा हूँ और मैं यूं कर रहा हूँ ऐसे. For some reason I don't know why. Shit यार। So they kept me in the ICU for about 2 days. Doctors आए, doctors couldn't figure out anything. उन्होंने कहा जी जो था गुजर गया. माशाल्लाह से. What's a stupid answer. जिम लगाते हो जी, आपकी वेनें क्यों इतनी मोटी हैं? मैंने कहा एक्सरसाइज करता हूँ इस वजह से. एंजियोग्राफी होगी जी आपकी. पहला वजह एंजियोग्राफी कर दी मेरी. फिर उसने मेरे से पूछा सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो? मैं कहा जी बिल्कुल यूज़ करता हूँ. कहता आइस तो नहीं करते हो? क्या नहीं आइस, ड्रग्स. अच्छा ड्रग्स, अच्छा कोकेन अच्छा, और इस कोक तरह. कोक, अच्छा अच्छा। मैं कहा नहीं यार क्या हो गया, मैं एक्सरसाइज हाँ। करता हूँ, जिम लगाता हूँ, आई एम अ हेल्दी इंडिविजुअल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. हाँ हाँ। तो उसने पुट्ठे सीधे मेरे से सवाल पूछे. अब जाहिर है मैंने पूरी रात आईसीयू में गुजारी है, तो माय फैमिली इज कंसर्न कि यार ये किधर है, आया नहीं है घर. हाँ। सो दे कॉल्ड माय फैमिली अप, दे केम इन द मॉर्निंग. ऑब्वियसली माय मॉम सॉ मी, शी वाज वेरी इमोशनल. भाई आया मेरा, भाई बहुत शॉक हो गया कि यार ये क्या हो रहा है और तूने मुझे बताया क्यों नहीं है. ब्रदर्स, मतलब समझ, बड़ा भाई है यार. Oh. My only concern was as soon as I woke up, the first question I asked the doctor was when can I start training again. डॉक्टर ने मुझे यूँ देखा, उसने कहा बेटा आपका दिमाग ठीक है, खैरियत है, आप आईसीयू में पड़े हुए और अभी तक तुमने जिम जाना है. तब क्या मेरे पे. फिर उसने मेरे से सवाल पूछना शुरू कर दिए, सप्लीमेंट्स कौन सी यूज़ करते हो, प्रोटीन यूज़ करते हो? मैंने कहा हाँ. कहता प्रोटीन नहीं यूज़ करना. मैंने कहा क्यों? कहता उसमें चीनी होती है. मैं उससे आर्ग्यू करने लग गया कि ये क्या बात हुई, वो काइंड ऑफ, तो मुझे हाँ पाकिस्तानी हाँ डॉक्टर वो. हाँ। खैर आईसीयू से निकला, फिर उन्होंने कहा जी यू नीड टू गेट दिस चेक्ड, यू नीड टू गो सी अ कार्डियोलॉजिस्ट, आपने ईसीजी करानी है, आपने एमआरआईज कराने हैं, सारा कुछ कराना है, ये आप बराए मेहरबानी करें. जिम आपको सख्ती से मना है. नहीं मुश्किल है, जिम तो मैं जाऊँगा, राइट. सो उधर से मैं डिस्चार्ज हुआ, couldn't breathe right, went back home, तो I still had clips on me, बहुत हर जगह clips लगे हुए थे. I took those off. मैंने इधर देखा तो इधर दो निशान बने हुए थे उसके. वहाँ All of this area was burned up. सही। Couldn't breathe. If I walked up the stairs, so my heart rate would go 200 plus. So I went from training for 5 hours a day to not being able to walk up the stairs, and that was a huge setback mentally for me. कि यार, I came to a point where I was like, no one can stop me. I'm unstoppable. मैं 5 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, कोई सीन ही नहीं है. तो वो जब मुझे हिट हुआ तो that was kind of वो. फिर भाई ने मुझे बोला यार take this one step at a time, don't get depressed, you'll get through this. I had tremendous support from my family. घर पहुंचा, rested for a week, and then back in the gym again. Without even telling my family. अच्छा Yeah, don't worry, I'll handle it. फिर So kept training. हाँ Now I realized that the small things would mess this up. If I got angry at something, my heart rate would go crazy. If I got stressed at something, my heart rate would go up. I can't drive fast. If I drive fast, तो adrenaline release होता था दोबारा से. अच्छा So it got bad. It got so bad to a point where वो जो gym bag नहीं आप लेके जाते हो, I couldn't carry that gym bag because if I carried the gym bag and climbed the stairs, so my heart rate would go crazy. So I had to struggle with that for a long time.
I had to hide things from my family कि मैं training नहीं कर रहा. Even then I would go to the gym and I would train. I would do a set and then I would check my heartbeat कि अच्छा ठीक है अभी. And then I would rest for a minute or two. जैसे ही वो settle down करता था, I would do another set. फिर वो बढ़ जाता था. तो इस तरह करते करते टूटी फूटी ट्रेनिंग में करता रहा कि यार ट्रेनिंग तो मैंने नहीं छोड़नी. You're at peak physical condition and someone just tells you कि can't do anything now. You need to stop. That didn't really sit right with me, right? February गुजर गया, March, April में for some reason I was pissed off. There was a lot of anger. I had an argument with someone or something. और उस दिन लेग डे था. So I went crazy on leg day. और मैंने लेग प्रेस का सेट किया and as soon as I got up, I knew it's happened. 250 पे चली गई हार्ट बीट. तो मैं वहीं से चुपचाप, मेरा दोस्त मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला. I got up from leg press, went to the reception. रिसेप्शन पे मेरा एक बड़ा अच्छा वो है मैनेजर है खलीक. मैंने बोला यार यू नीड टू कॉल द एम्बुलेंस. मुझे यूँ देखा कि भाई क्यों. तो उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया एंड आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ द जिम. नीचे जाके अल्लाह का शुक्र है उस दिन थोड़ी सी गर्मियाँ थी लेकिन हवा चल रही थी, थोड़ी सी बारिश हुई हुई थी. सो आई फेल्ट अ लिटिल प्लेजेंट बाहर जाके, क्योंकि उस टाइम सांस बिल्कुल नहीं आ रहा होता आपका और हार्ट रेट आपका 300 पे होता है तो इट्स वेरी हार्ड. सो आई केप्ट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स. मेरे साथ एक लड़का आ गया जिम का ही, वो मेरे साथ चलने लगे. उसने कहा सर ठीक है सब खैरियत है, क्या हो गया. इतनी देर में ज़हीम आ गया. उसने कहा यार मेरे पास गाड़ी है, फॉरगेट वेटिंग अबाउट फॉर द एम्बुलेंस, आई विल टेक यू. इतनी देर में मैंने भाई, मुझे याद आया कि पिछली दफ़ा मैंने भाई को नहीं बताया था, भाई बहुत ताप गया था. भाई को बताया. मैंने कहा अच्छा यू गो टू द हॉस्पिटल, आई विल मीट यू देयर. वेंट टू द हॉस्पिटल. उन्होंने कहा जी गेस व्हाट सन, यू गेट शॉक्ड अगेन. ट्राइड मेडिसिन, डिडंट वर्क. सेम चीज़ अगेन. ओह शिट. मैंने कहा लास्ट टाइम तुम लोगों ने मुझे शॉक किया था एंड आई हैड अ लॉट ऑफ पेन, इस टाइम मुझे सेडेटिव्स दो. तो उन्होंने कहा हाँ डोंट वरी विल गिव यू सेडेटिव. द सेम थिंग हैपेंड. आई वाज हाफ अस्लीप एंड दे डिड इट एंड आई वाज लाइक, तो मैं 3-4 गालियाँ दी डॉक्टर्स को. फिर उन्होंने कहा जी यू नीड टू स्टे विद इन द हॉस्पिटल, नहीं जा सकते आपने आईसीयू में ही रहना है. मैंने कहा आई बिन थ्रू दिस बिफोर, घर भेजो मुझे, कोई मसला नहीं है. माई डॉग वाज सिक so he was in the hospital as well. अच्छा. So as soon as I got discharged from the ICU, CCU, I went straight to The vet. सुबह के 4 बजे. अच्छा. तो उसके पास मैं गया, उसको पार्वो था. तो आई हैड वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द डॉग एज वेल, क्योंकि वी वर गोइंग थ्रू सिमिलर सॉर्ट ऑफ वो. उसका भी डॉक्टर ने जवाब दिया था इसका कोई सीन नहीं है. खैर वो सारा, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर स्मॉल थिंग्स वर स्ट्रेसिंग मी आउट. वो सारा कुछ हो रहा था, उससे क्लियर अप हुआ. डॉक्टर्स स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन. फाइनली आई फाउंड अ डॉक्टर इन द यूके. उसने कहा व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. इट इज़ वेरी वेरी कॉमन अमंगस्ट एथलीट्स. इट इज़ वेरी वेरी कॉमन अमंगस्ट elite athletes. मैंने वो elite athlete वाली बात सुनी और मैंने कहा yes, मैं elite athlete motivation. हाँ, समझ कि मेरा resting heart rate था 37-39. अच्छा. So I went from a 37-39 resting heart rate to 100 सही. resting heart rate. You're in bed and आपका heart rate उस point पे है कि as if you're walking on a treadmill. So that was tough. Couldn't sleep. At 100 heartbeat you can't really sleep well. Your heartbeat needs to slow down and then you go into deep sleep, right? That was a struggle. Developed a lot of insomnia. नींद बेहतर नहीं होती थी, रिकवरी अच्छी नहीं होती थी. डॉक्टर ने कहा जी आप आ जाए यूके, देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड कैथेटर एब्लेशन, आई विल डू दैट एंड यू विल बी फाइन. तो फिर मैं उस प्रोसेस में लग गया. गॉट माय वीज़ा रिजेक्टेड ट्वाइस इवन दो आई वाज स्टूडेंट इन द यूके. वीज़ा नहीं आया. फिर उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा कि यार, हालांकि उसने जून का विंडो मेरे लिए बुक किया हुआ था, बाद जून से चली गई अगस्त तक, नहीं आया वीज़ा. फिर उसने मुझे कहा यार आई हैव गॉट अ वेरी गुड कॉलीग इन कतर, तो व्हाई डोंट यू गो टू हिम सेड, और कतर का आपको ऑन अराइवल वीज़ा ही मिल जाएगा. मैं कहा दैट्स परफेक्टली फाइन विद मी. वेंट टू कतर, गॉट इन टच विद द डॉक्टर, वंडरफुल डॉक्टर, अमेजिंग, वी आर स्टिल इन टच. उसने कहा जी आई डोंट नीड टू डू एनी टेस्ट्स, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आर यू समवन हु ट्रेन्स, आर यू समवन हु इज इनटू स्पोर्ट्स. मैंने कहा जी आई ट्रेन लाइक एन एनिमल, 5-6 घंटे, ये इस सिचुएशन. उसने कहा यू दिस इज ऑल जेनेटिक, यू वर बोर्न विद एन एक्स्ट्रा वायर इन योर हार्ट. आपके हार्ट के साथ एक बायोलॉजिकल पेस मेकर होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. ठीक है. तो ये जो टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन और जो इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं लोगों को, दैट्स बिकॉज दे हैव एन एक्स्ट्रा वायर इन देयर हार्ट और समथिंग इज शॉर्ट सर्किटिंग. सही. उसने कहा जी एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, छोटा तो नहीं था, प्रोसीजर होता है कैथेटर एब्लेशन का. उसमें वी मैप अराउंड योर हार्ट एंड वी फाइंड दैट नॉर्मल सिग्नल एंड वी बर्न इट. मैं कहा ठीक है, गेट इट डन. दैट वाज एन 8 hour लॉन्ग सर्जरी यार. उनको ढूंढने में टाइम लगा था. मतलब they had to induce it first. They had to get me into tachycardia, मतलब 250 plus beats. अच्छा. और ऑक्सीजन था उस पे. But I had to be awake throughout the whole surgery.
Shit, क्यों? There's no general anesthesia. अच्छा अच्छा. Because it's the heart, they need to talk to me, they need to get feedback, they need to tell me to Right. control my breathing. Right. So for 8 hours, they tie you up to a bed, literally tie you up to a bed. Like that. Can't move. हाथ बंधे हुए हैं. हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं, सब कुछ बंधा हुआ है. 8 घंटे आप यूं. So you have to stay there. That was a horrible experience. But eventually, भला उस डॉक्टर का, he was very knowledgeable, very experienced. सही. He eventually found it, he mapped it, and then he sort of burned it about 6-7 times, and I could literally feel something मतलब poking my heart. और यहाँ से पहले वो इधर जाता था. पहले उसने मुझे कहा during the surgery, he told me कि यार it's very close to your pacemaker, and obviously you're breathing. When you're breathing, your chest is moving. If I burn this and I burn your pacemaker, your kapoosh. Yeah. समझे? What I need to do is I need to find an alternate way, because ये pacemaker है और ये abnormal signal है. ठीक है. तो मैंने कहा doc, I came to you from all the way from Pakistan. I need to get back to training. I don't care. Do it. उसने कहा अच्छा चलो I'll find another route. तो उसने फिर यहाँ पे ग्रोइन एरिया में कोई छोटा सा होल करते हैं, उसमें आर्टरी के थ्रू इलेक्ट्रोड डालते हैं. दैट ट्रैवल्स ऑल द वे फ्रॉम हेयर. फिर इधर आके देन ही साइड के ऑल राइट यू नीड टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग एंड आई एम गोना स्टार्ट एब्लेशन. अच्छा. उसने एब्लेशन की. उसकी एब्लेशन करने के बाद उसने मुझे फिर इवेंचुअली लास्ट 20 मिनट्स में उसने मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया कि सो जा 20 मिनट के लिए. ठीक है. और 20 मिनट में उसने फिर दबा के मुझे एड्रेनलिन दी, इंड्यूस करने की कोशिश की, नहीं हुआ इंड्यूस, एंड देन ही फाइनली शॉक मी अप अगेन, और देन आई वोक अप इन द वार्ड. तो एट दैट टाइम योर हार्ट वाजंट फंक्शनिंग. इट वाज फंक्शनिंग, अच्छा. बट उसने कहा कि सिंस फॉर द पास्ट 6-7 आवर्स योर हार्ट बीट हैज बीन बीटिंग एबनॉर्मली 200-250 प्लस, सही है. आई नीड टू रीसेट इट. अच्छा. पोस्ट एब्लेशन उसने दोबारा ट्राई किया टाकीकार्डिया इंड्यूस करने के लिए, नहीं हुआ. देन ही शॉक मी अप, रीसेट किया सारा फैक्ट्री. हाँ. कहते चलो जी ठीक है. तो 3 दफ़ा रीसेट हुए हो आप. 3 दफ़ा रीसेट हुआ हूँ 2022 में मैं. अच्छा. एंड इसमें व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू वर डिक्लेयर्ड क्लिनिकली द फर्स्ट फरवरी. अच्छा. फरवरी वाले उसमें 3 सेकंड के लिए. 3 सेकंड के लिए. The line went flat and then it went boom. Shit man. मुझे literally zero idea था क्या क्या हो रहा है. I didn't really talk about it. मैंने Yeah. एक पोस्ट उस पे लगाई थी, वो भी वैमी बोर हो रहा था मैं. अच्छा. But other than that, I didn't really. What was the Shit, point man. of crying over it? यार हो गया. हाँ. Taught me a lot of patience. Hmm. I had a lot of temper issues. I had a lot of aggression issues. Yeah. And अगर आपको गुस्सा आता है और आपका heart rate बढ़ रहा है, then you need to control it, right? So that sort of forced me to control it. So it was all positive. I learned a lot of things from it. सही. I learned how to control myself, control my emotions. Temper नहीं lose करना, गुस्सा नहीं करना, stress out नहीं होना. You need to take things lightly. So it helped. It taught me a lot of patience. Right. Humbled me. मतलब I was someone who was like, bro, I'm invincible. No one can mess with me. मैं 5-6 घंटे train करता हूँ. You can't even imagine sort of training I do. That was God's way of telling me कि easy हो जा. easy हो जा. Right. So I'm glad it happened. Yeah, it taught me a lot of things. So if you could, and Allah na करे you go back, but hypothetically if that happened with you knowing all of this कि यार ये सारा होना है. Yeah. Yeah, let's say you go back in time. Yeah. ठीक है, you know कि यार आगे ये होना है. Yeah. Would you train again, go into the gym again and do legs again उसी तरह कि would you be like यार नहीं. I'd ऐसा नहीं. still probably do it. You'd still do it. Probably work myself to exhaustion. अच्छा. I'd सही. still do it. Yeah, you have देखो. Training में you have to be a little crazy. You have to be a little cuckoo in the head. हाँ. मतलब अक्सर आप बॉडी बिल्डर्स को देखते हो ना, who get under 3 plates, 4 plates. They're not mentally. You have to be a little crazy too. So it's part of life, यार. Plus Allah Taala की तरफ से है. There's always goods in everything. It's not all bad. Tachycardia wasn't all bad. Taught me a lot of things. Taught me very close to my family. I figured out who my close friends were. Right? Support किस किस की थी, किस किस की support नहीं थी. Figure out my finances. मतलब it put a lot of people in the spotlight. Since I'm obviously very very sick now, I can't get out of bed. Even if I stand up, my heart rate goes to 150. Someone had to take care of the business, right? That's where my partner rose to the occasion, and he took care of everything. Even though he's a celebrity, he's got all of his concerts and baki cheezein hain, but he was like, bro, you get yourself fixed. I got this. Don't worry about it. So matlab that created a lot of, it strengthened the bond now with the family, with the friends that were involved, with everything. So alhamdulillah, yaar. Don't worry. सही. तो अभी after
all of this experience and your training experience, Yeah. more than a decade of training, right now, what's your fitness goal right now? ये लगाने I want to see how far I can go. But Lucky me. with this condition, yeah, I don't think that's going to be possible. And I'm so glad I didn't use it before because that would have been disastrous. No, but like after the surgery, Yeah. you still have to be careful of things. Yeah, I have recovered, obviously. I've got an MRI next month. So September में एक साल हो जाएगा almost. ठीक The है. first couple of, मतलब, the surgery happened and I was in the gym in the third day, bro. मैं तीसरे दिन अपने होटल के जिम में गया, भाई को बताए, कतर में ही, भाई को बताए बगैर, और for some reason he walked into the gym. हालांकि वो जिम जाता भी नहीं शक हुआ है, होगा और उसने मुझे देखा और उसने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमने मरना है, पागल तो नहीं हो, तुम्हें अभी सर्जरी हुई है तुम्हारी. So but I didn't really, पता नहीं यार, उस टाइम मेरा माइंडसेट था कि I need to get back to training. So I started with small things, lifting 1 kg dumbbells, squat करना है तो box squat करना है, body weight, box पे बैठना है, 2 सेकंड वेट करना है, फिर उठना है. That's how, मतलब, I had to build back up slowly. अब I'm back training again, boxing training, lifting weights, training for 2 hours at least. ठीक है. अब बीच में होता है थोड़ा सा तंग होता हूँ, shortness of breath होती है, but that's probably because of paranoia as well. Could be. आपको मेंटल रिकवरी भी तो चाहिए होती है ना, Yeah. कि दोबारा ना हो जाए, इवन दो योर स्टिल थोड़ा सा हाइपोकॉन्ड्रियाक हो जाता है बंदा अपनी उसके बाद. दैट्स ऑलराइट, दैट डजंट हैव टू डू विद एनीथिंग, मतलब कि वो Right. दैट्स परफेक्टली फाइन. तो अभी जो गोल है Yeah. अगले कुछ साल का, लेट्स से अगले 5 साल का, वो ये है कि जेनेटिक यू प्रीटी क्लोज टू यार दैट, वो आई हैव डन दैट उसके थ्रू जाना है. हाँ, but अब मेरा गोल है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग 18-19 inch biceps if you can't really do something with it, if you can't fight, if you can't run. या अग्रीड. मेरी ज़ाहिर है वाले साहब के साथ एवरीथिंग, आई लिंक एवरीथिंग टू माय फादर. I've seen soldiers, I've seen commandos, they weigh about 70 kg, 71, 72. They're able to run, they're able to fight. I'm sure they can take any bodybuilder. SSG commandos भी हैं, वो आजकल के bodybuilders को खा जाएं. By the time you throw a punch, they'll murder you, right? So you don't really need to be big. If you want to be, if you're, मतलब आपकी ये attachment है कि जब तक मैं इतना बड़ा डंगर नहीं हूँ तो मतलब I'm not going to feel content with myself, so there's something wrong. You need to fix that first. A lot of these people rely on कि अच्छा जी, ओह मेरा अगर 18 इंच का बाजू नहीं है या 19 इंच का बाजू नहीं है तो I'm going to get depressed. Oh bro, there's something wrong with you. Yeah. You need to be comfortable in your skin. You don't need a lot of muscle to knock someone out. End of the day, you're a man, right? You need to protect your family. You need to provide. मतलब ठीक है, you're getting stronger, you're getting bigger, अच्छी बात है, मुझे भी शौक है, but not to a point where I want to be a Mr. Olympia level. आपने भी एक दफ़ा पूछा था कि यार why don't you compete? मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मैं इतनी सी चड्डी पहन के तेल लगा के क्यों, वो भी किसी जज के एस्थेटिक उससे, कि अगर उसको अच्छा लग रहा है तो he'll give you points, otherwise you're not gonna. बहुत सब्जेक्टिव है ना बहुत. It never made sense to me. The whole idea when I started training was never to compete. Yeah. अगर competitive होना है तो maybe some sort of combat sports, that makes a lot of sense. Bodybuilding is not an Olympic sport. It's not a practical sport, na? It's मतलब like, it's not a sport. It's a, I love Athletics, it. I absolutely adore bodybuilding. But मतलब calling it a sport, yeah. मुश्किल है. I guess we adore it because I feel the same because of the discipline that it teaches us. है ना? There is a lot of things bodybuilding will teach you. Yeah. Bodybuilding will teach you a lot of patience, a lot of delayed gratification. It'll teach you a lot of discipline. It'll give you confidence. It'll give a lot of structure to your life, and then you can use all of those things and apply those things to other Outside of it, yeah. आपकी life में जो बाकी चीज़ें हैं ना, a lot of things I've learned through bodybuilding I've applied to business. Yeah, you need to be consistent. You can't give up. You need to be persistent. Nothing happens in one day. You don't build big ass biceps in a week. You're not gonna build a huge business in a week either. It's gonna take time. It's taken you a decade and a half to build your physique. Obviously, it's going to take some time to build your business as well. So all of these things translated into that. So उस लिहाज से तो it's absolutely perfect. I think everyone should do it. Yeah. Bodybuilding नहीं, training. Training. Everyone should do some sort of physical activity. ज़रूरी नहीं है कि you need to stand up on stage and pose and मतलब nothing against people who do. Yeah. तो अच्छी बात है. But personally, that's never been my goal. I'm more into के how can I use my physique. अगर मैं एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ उसको वो कर रहा हूँ तो क्या मैं उसको कॉम्बैट स्पोर्ट्स में यूटिलाइज कर सकता हूँ? कैन आई यूटिलाइज दैट इन स्प्रिंटिंग, रनिंग?
और कैलिस्थेनिक्स और इस तरह की चीज़ें. Yeah. So that's my kind of hybrid सही. training. Very similar to what I have in mind now. Yeah. पहले मेरा भी ये होता था. Like मुझे ना कुछ दिन पहले किसी ने ऑफिस में बोला कि क्योंकि I am right now from my usual weight I think like 8-9 kg lighter और इसको मैं maintain कर रहा हूँ क्योंकि I am trying other What's your things. usual weight? Yeah, it's usually 71 kg. अभी I'm like 62, 63. You're lean. I saw your pictures. You're very, very lean. और Yeah, natural, yeah. यार natural में यही है. हाँ. A lot of these guys who come in for quote unquote cutting, उनको मैं यही कहता हूँ कि यार you're gonna get, if you're natural, आपकी physique और जो आपकी conditioning है वो निकलेगी when you're in your 60s. Yeah. And a lot of these people argue कि नहीं यार I want to be 75 and be 6% body fat. No, Not bitch, gonna that's happen, not gonna happen. Yeah. You're gonna use a lot of drugs to do that. हाँ. अगर आपको naturally वो बनानी है तो you'll touch your 60s. Peak week पे मेरा weight 65 था. Yeah. समझे? और अगले दिन 70 था. That's पानी के because बाद. I had depleted all of that water, carbs and everything. सही. So I smashed my peak week. Good यार. Yeah. तो मुझे किसी ने बोला यार तुझे क्योंकि इसको आदत है ऑफिस में देखने की 71 kg तो ये बल्कि तो साथ मुंह भी मोटा है तो ये वो. अच्छा. तो मुझे कहते हैं यार तुझे क्या हुआ है ना. मुझे क्या हुआ है. कहते वो जो होता है कहते यार तू तो फारिग हो गया यार. पुट्टे सीधे सवाल एग्जैक्टली. तू तो फारिग हो गया ना. मैंने कहा नहीं यार मैं तो आई फील गुड. कहते नहीं यार तू तो व्हाट्स द वर्ड दैट ही यूज्ड. कहता तू तो फिस गया. फिस गया बिल्कुल. तू फिस गया. तो इफ इट वर द ओल्ड मी ना लाइक 2 years back 3 years back taking it to heart. मैं घर जाता मैं कहता दो मुझे खाना दो मैंने ये खाना है वो खाना है. मैं चिल में I am past I know that. man. Exactly. I know can completely relate. Yeah. मेरी ये सर्जरी and a lot of people came up to me यार अहमद भाई आप तो बिल्कुल ही खत्म हो गए क्या हुआ है आपको. अब मैं हर बंदे को ये पूरी एपिसोड तो नहीं बता सकता कि यार मेरी जिंदगी में पिछले 1 साल में I have had multiple surgeries, multiple resets. Right? I didn't really care about. ये अब मतलब the 20-year-olds और 21-year-olds इस तरह की बातें करें तो ठीक है. Otherwise I'm not really concerned. वही बात है ना. Okay, alhamdulillah we're at a point we're comfortable in our skin. हाँ 100%. And we know यार कि इसकी practicality बहुत है अभी मेरी फिजिक की. मैं इसको like मतलब if I want to bulk up मेरा मेन गोल था कि पोस्ट सर्जरी भी I have to maintain my conditioning. I can't get fat. I need to maintain a certain degree of body fat percentage, lean रहना है. If you're lean तो you can always bulk up यार. You can always gain some muscle within 3 months, 4 months, 5 months. Yeah. So that's not a problem. अभी मैं I'm recovering through all of this. वो अगले महीने मेरा MRI है and I'm planning to gain a little weight थोड़ा अरसे बाद 5-6 kg. Why not? See what's up. ठीक. तो आप थोड़ा बहुत experiment कर सकते हो. Right. That's all right. But yeah. It'll do your body good if you're not carrying excess weight. Fat is dead weight. Muscle is active tissue. Active tissue will always benefit you compared to dead weight. 80 kg का बंदा 15% body fat पे और 80 kg का बंदा 8% body fat पे are two completely different individuals, right? Yeah. Their health and their health markers are completely different as well, unless one of them is using something. That's another story. Yeah. But coming to that, ये भी एक है कि why not explore your potential? See what's up. How far you can take this. So are you seriously considering that? मुझे लगता है Why not? लगा रहा है. Why not? Like TRT type चीज बाद में कि नहीं something else? Yeah, why not? Maybe somewhere down the line. अच्छा. I'm not sure yet. I'm more concerned with I've got responsibilities, right? My father's passed away. I've got a mom to look after. I can't be experimenting with drugs that might have an adverse effect on my health. So currently my number one priority is health. ये सारा कुछ set हो जाए. If I'm in a position where everything's good, you know, we all have certain numbers that we want to reach कि उसके बाद हाँ जी इतनी financial stability आ गया मैं, you know, maybe why not? Sorry. But keeping in mind so that I'm you open want to it. 5 years ago I wasn't open to it. 5 years ago if अच्छा. someone talked about it I was like pussy. But now I'm kind of open to it कि यार. But keeping in mind the practical aspect of it कि body में मेरी है तो सिर्फ दिखावे वाली ना हो. हाँ obviously. मतलब I don't just एक बड़ा मैंने इतना बड़ा गुरिल्ला नहीं बनना. It needs to be functional. It needs to translate into something. अभी I was watching this video where they were talking about Bradley Martin versus this bantamweight MMA fighter who's 125 pounds. अच्छा. And this guy went that 125 pound guy in an MMA fight will knock you out in or choke you out in an MMA fight. Bradley Martin अच्छा खासा डंगा है. मतलब समझ रहे हो आप? You don't need a lot of muscle to knock someone out or be able to fight and all of that. And I think everyone should know how to fight. Lifting weights isn't really going to help you उससे. Lifting weights will increase your longevity, health, mental health, बाकी सारी चीजें. But to confuse that with KG, that's going to make me a little more, you know, intimidating or whoa, that's the wrong approach. Yeah. Use it उस तरह.
It will make you think you can beat people up. Like Yeah. initial But confidence that's आ a जाएगा. delusion. Yeah. हाँ, वो डिलूजन आपका कोई ना कोई एक छोटा सा पतला सा फाइटर आके पूरा कर देगा. Yeah. अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए, but yeah, no, that's eventually you're a man, right? You need to protect your family. Yeah. So you need to be able to protect your family. You need to be able to fight. You need to have mental toughness. You need to be mentally resilient. जिधर बाकी लोग टूट जाते हैं उधर आपको खड़ा रहना है. Top G words. हाँ, hyper competitive world है bro. मतलब you can't really sit down and आप बैठ के depressed नहीं बैठ सकते हो. Yeah. Still have to push through. Depression is a luxury anyway. मतलब एक मजदूर को डिप्रेशन होता है, he still has to get up in the morning, go to work, as compared to a rich brat who आज दिल नहीं कर रहा. It's a luxury. In what sense? Like luxury कैसे? यार luxury in the sense कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा. You're not really giving yourself a fighting chance. If you're depressed, you identify that. So you need to give yourself a fighting chance as well. You need to go train. Did you train today? No, you didn't. ये जी मेरे में हिम्मत नहीं है. If you can get up, walk to the fridge and get something to drink, आप में हिम्मत है. You can move around, you can do push-ups, you can do squats, you can go for a walk, you can go for a hike. You take your dogs out. मतलब अगर आपने एक कमरे में बंद हो जाना है, लाइटें बंद कर देनी है और बस कहना है कि जी मैं डिप्रेस्ड हूँ, सारे ऐसे हैं, सारे बुरे हैं, मैंने किसी से मिलना नहीं है, सब गंदे हैं, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू, इज इट? एज कम्पेयर टू एक बंदा गरीब आदमी जो बेचारा डिप्रेस होता है, ही स्टिल हैज टू गो टू वर्क ब्रो. He doesn't have time to get depressed. And he still needs to pay the bills. He still got people to take care of. He still got kids, his mom, wife. So उस लिहाज से. अच्छा, I guess you're talking about people जिनको depression होता है because of something that happened. कुछ लोग तारी कर लेते हैं हम लोग. इतना कुछ होता नहीं है. बड़े बड़े लोगों की first world problems में with this thing कि जी मुझे depression हो गया. Breakup हुआ तो depression हो गया. Shut the fuck up. क्या हो गया? कुछ ज़्यादा ही आजकल हो रहा है. But obviously that's different from people who have. Do you think your father had time to get depressed? He was busy providing for you and your family. Yeah. Right? Yeah. I think our fathers are the prime example of masculinity. The generation before us. Yes. They didn't care. They weren't arguing with feminists कि oh जी toxic masculinity के बारे में आपने इस तरह क्यों कहा, ये क्यों कहा. They were busy paying the bills. They were busy getting things done. Right? मतलब I had a wonderful, wonderful childhood. I've had wonderful parents. My mom was always there to help my father. My father was always there to help my mom, understand her. They had a beautiful, beautiful bond. They had a successful marriage for 30 years. So, matlab, they are prime examples of masculine and feminine energy coming together and building something absolutely amazing. We're the product of that. Matlab, all of us brothers are blessed to have parents like that. I have no right to complain. Yeah. None at all. No. Matlab, वो मुझे वाले साहब ने कहा था कि यार when I go, you have, the show must go on. Can't sit down. और प्लस ही समवन हु स्पेंड टाइम इन सियाचिन, ही वाज अ सोल्जर यार. बड़े लोगों को फौज से बड़ी तकलीफ है, बट यू नो ही वाज अ टफ गाय. ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स के द शो मस्ट गो ऑन, यू कांट गिव अप. अल्लाह ताला की मर्जी होती है. इफ समथिंग हैपेंस, इट्स यू नो, कांट ड्वेल ऑन इट, यू हैव टू मूव ऑन. या थिंक सो दैट हेल्प्ड. आई वाज काइंड ऑफ स्टक फॉर अ बिट देयर, बट मेन आर देयर एब्सोल्यूट बेस्ट व्हेन दे आर बिल्डिंग समथिंग. फिजिक बना रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं, they're striving towards something. They know कि अच्छा जी मैंने वहाँ तक पहुँचना है, and they're building towards it. Depression can't do shit to you. What about clinical depression, जो actual होता है, जो बैठे बैठे हो जाते हैं बगैर किसी थॉट के समझ नहीं आती बंदे को. यार clinical depression है, ठीक है, बट वही वाली बात है ना कि आपको you need discipline, right? वो थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको चाहिए ना कि आप यू स्टार्ट स्मॉल थिंग्स. आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप जिम जाके 5 घंटे वर्कआउट करो, बट यू स्टिल नीड टू गो टू द जिम. You still need to train specifically इस वजह से for your mental health. मतलब एक बंदे की टांग टूटती है ना, तो आप उसको क्या कहते हो, फिजियोथेरेपी कराओ. फिजियोथेरेपी नहीं कराओगे तो it's not gonna work. Yeah. So you still have to do all of those things. Plus if you're gonna sit down, we all go through depression. I'll be honest. You've been through it. I've been through it. A lot of people I know in my close circle have been through it. But they all sort of came out of it eventually, थोड़ा करके, छोटे steps लेके, giving themselves a fighting chance. Yeah. If you're not going to give yourself a fighting chance, you're doomed. You're not going to... Matlab, a lot of these people start binge eating, no training, insomnia, watching stupid TV shows and relating to that TV show. Matlab, listening to sad songs. I stopped listening to songs with lyrics, by the way. Because that plays in your subconscious mind. If I listen to a breakup song for a week, अगर मेरी बंदी नहीं भी है तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा. समझ आई? So, matlab, you need to be very careful. मेरा Instagram is not about
फैंसी वो चीज़ें कि फलाना बंदा इधर वेकेशन पे जा रहा है, उधर जा रहा है. इट्स ऑल अबाउट मेंटल डेवलपमेंट. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट. You're spending 5-6 hours a day on social media. There's no question about it. As soon as you wake up, the first thing you do is open up your social media. तो अगर उस पर कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, कुछ स्टोइक चीज़ें आ रही हैं, कुछ उस पर मेंटल डेवलपमेंट वाली चीज़ें आ रही हैं, people who are driven are speaking to you through that social media platform, use it. You know, आपको बहुत सारी वो मिल जाती हैं इस पे. You can relate to all of those things. अभी मैं जॉर्डन पीटरसन की एक मैंने वीडियो सेव की है जिसमें he's talking about कि यार you need to be the most reliable person on your father's funeral. And that's absolutely right. Yeah. मैंने देखी है. मैंने देखी है. देखिए ना वीडियो. That clicked यार मेरे. I saved that video. I could really relate to that. That's gonna build character. Your family is already broken, right? Yeah. So if you're strong, you can carry them with you and you can get yourself out of it. It's already a tragedy. Yeah. So that's wonderful यार. मतलब मुझे I've been through depression, but I came out of it, right? Yeah. I didn't go. I'm not saying you shouldn't go to therapy or anything. You should get all the help you can, 100%. But for me, my therapy was the gym. And even in therapy, like वो आपको डिप्रेशन से नहीं निकालते. वो आपको बताते हैं इस They तरीके help से you navigate. आपने निकलना है. Yeah. आपने एंड में खुद निकलना है. आपने करना खुद ही. हाँ. You're the only one who's concerned with your well-being, right? No one's going to do Yeah. it for you. No one's concerned with आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. You have to fix it. You have to build something. Yeah. Hyper competitive world. No one cares. मतलब जो बंदा डिप्रेस हुआ हुआ है और वो काम पे जा रहा है, he's gonna triumph, he's gonna be successful, as opposed to you sitting down crying there like little. Yeah, man. चलो bro, this was great. This is a great bro. convo. It was a lot of fun. 1.5 घंटा गुजर गया, पता नहीं लगा. Yeah. But for everyone who is watching till the end, अब तक अगर देख रहे हैं, thank you so much for watching till the end. And if you guys like the content, please feel free to subscribe to the channel. Top G. टॉप जी हमारे यहाँ Top पे G. देसी टॉप जी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे. So if you guys want more content around physical fitness, mental fitness, toughness and self improvement, please continue watching our videos and subscribe to the channel. Let me know what you guys think of the videos in the comment section below. और अब मैं आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. Till then, this is NSJD signing out. Allah Hafiz.